Yo, This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. what's good? Hold on. What is up? Another weekend, another stupid contest. So, music too loud. Let me wait for people to join in. It's bi-weekly contest. Bye. I'm excited, bro. It's been so long since I feel, when was my last stream? Almost, of course, a goddamn week ago. Let me stop the music. Yeah, another week, another contest. What contest number is this, bro? Let's take a look. 12 minutes and it's 495. This would actually be my which contest? This would be my 35th contest. Rating update. How are y'all rating have been? How much has your rating become? Bhai job lagi. Yeah, bro. I'm doing an intern. What about you? Are you giving the contest? Yes, talking about the rating. Let's take at the rating update, bro. Last week's contest was good for me. I'm happy with the rating update. Let's take a look. Remove this. 19, goddamn 17. I'm not near my peak. My peak was 1932. Then, due to some unforeseen circumstances, I reached 17k rank. Is insane. Holy shit, bro. 17k is insane. Yeah, we don't talk about that. But last week, after the weekly contest, we got a rank of 2.1k. And we are back to 1930. Honestly, bro, it might be tough to even gain ratings from here. That how much rank did I got 1.4k? Bro, how did I got that 1.4k rank? Wait. How did I even get that 1.4k rank? Absolute unit when it comes to consistent contest game. Yes, sir. By the way, we have been monetized. I mean, yeah, I'll show you guys my revenue once a few people join. It's a joke, but yeah, it's an achievement. I was taking a look at that 1.4k rank that I got. How the hell did I even get that 1.4k rank? It was the last bi-weekly, damn. Last bi-weekly. Oh, it was the one wherein I solved 3 questions in 14 minutes. Okay. Makes sense, bro. Makes sense. I'm not so... New thumbnail, yes sir. Vedant Pandey. What's up, dude? Congrats, bro. Congrats about what? Let me show you my revenue. Let me show you. Acha, okay, you're telling me congrats about that job. Okay, thanks, bro. Thanks. आते ही यार दिख bro, that's not me, that's YouTube. Blame YouTube for that. Blame YouTube for that. My hopes नहीं बढ़ा रहा, but we'll try to solve 2 questions fast. Bro, 2 questions you can. Within 25 minutes, okay, within 20 minutes, I'll tell you you'll do the 2 questions. Congrats, bro. Congrats about what though? What are people congratulating me about? Congrats about what? Damn, my neck hurt, bro. What are your guys' rating? I got a good rating from the last contest. What about you? I got 1917. Thanks, broski. Yes, sir. Yes, sir. How much time is left before the contest starts? We have 5 minutes to yap. Right. 5 minutes to yap. For your monetization. Okay, so people genuinely think I'm earning from YouTube. Do you want to see how much I made? Plus 11, 1636. Damn, that's nice, bro. Congrats. Nice one. Do you actually want to see my revenue? If you guys think I'm making a... Okay. I'll tell you. Overall, why is my chat not visible? Bro, why? Why? It's live chat. I think it should be visible. Good consistency. Thanks, bro. Thanks. You guys want to see my revenue. But it's a start. Now you have a clear path in future. Nah. I mean...
Yeah, you may say so. Yeah, thanks, bro. R2 Educational Fact 713. Bro, मैच चल रहा है, आरसीबी का मैच है, अब कॉन्टेस्ट देना पड़ेगा. अभी आईपीएल चालू हो गया. हो गया. Damn, I didn't know. Your college name, it's in the description, bro, mate. Cooked hack with info with 2 questions. Bro, you did 2 questions? You will get a call back. Trust me, you will. 2 questions. How many were even there? 4 or 3? There were 3, right? So yeah. Vamsha. What's up, Vamsha, bro? What is up? RCB versus SRH. Okay. zero point 0.1 rupees revenue. Okay, let me show you my revenue. You know what? Let me show you my revenue. Since you guys. Okay, not live streaming. I want to go to the YouTube studio. Why is it in Bengali? Damn, my neck hurts, bro. Let me show you my revenue. Yo, wait. I'll reveal it. Let me make some suspense. It is insane. Let me. Bro, contest rating गिरती जा रही है. What is it right now? Everyone cheated and hacked with anything. Of course, it's a cheating fest, bro. Thumbnail free बनाया है. Thanks, sir. Thanks. The thumbnail is for the occasion that I've been monetized. Take a guess at how much did I earn in 1 week. In 1 week. It is insane. Jitna bhi, I'll give away every single rupee that I earned. Sure, man. Okay. Let me not yam. Take a look at this. This was my revenue for the past, I don't know, 1 week. 9 goddamn cents. 9 cents USD to INR. Bro, AI, tell me, bro. 9 cents USD to INR. 8 goddamn rupees, bro. 8 goddamn rupees. इतनी धनराशि का क्या करूं मैं? 8 goddamn rupees is insane. We made 8 rupees in 1 week. 5k USD, 100. Absolutely. If I get 5,000 USD, bro, I'll quit my job. Let's have a party. Yeah, bro. 8 rupees is the budget. Let's share it. 8 rupees. What all can I? Let's ask ChatGPT, bro. Let's ask ChatGPT. Yo. Oh, my history had some really weird things. I have 8 rupees in my pocket and approximately 43 people to have a party with. 8 rupees is my budget. What all can I do to have fun? Let's ask ChatGPT, bro. Bro, that's elite level broke. The fuck it. 0. Bro, it's calling me broke. Play Chor Police Antakshari. This asshole, bro. He's calling me broke. We don't give a shit about him. It's 51 now. Kacha mango party, bro. Kacha mango is also 1 rupees per toffee. We can't distribute it amongst 53 people that are watching me right now. Nice thumbnails. Thanks, bro. Thanks. I don't need your money, girl. Just be loyal with your stream, bro. I stream every week. What do you mean? I stream every week. ChatGPT just roasts you, bro. He's an. You know what? Fuck ChatGPT. We don't give a shit about him. But yeah, we still have 8 rupees to party with. It's if somebody has any ideas of what we can do for that 8 rupees, bro, tell me. Yeah. See, this is that 8 rupees. These are those 8 rupees. This is how YouTube sends me my revenue. Guess what? Start solving from third, second, first. Oh, hell no, bro. Not at all. Not at all, bro. We don't want a rating loss. भाई तू ही कर ले पार्टी मेरे हिस्से का. Thanks, bro. Thanks. मुझे पेटीएम कर दे मेरे 1 रुपए. Avantika Bhatt blog, bro. DM on Insta with your UPI ID. I will. Give it back to YouTube. G-Wagon की booking कर दो. Absolutely. Oh wait, bro. The contest is about to start. Let's stop yapping. The contest is about to start. Let's actually focus now. It is 38 seconds. Good luck. Good luck to all. How everything going? Swastik, bro. What's up, bro? I'm good. What about you? Good luck for the contest to everybody, though. IPL, bro. I don't really watch much of IPL. But yeah, I also have a project to show you guys. It isn't anything crazy.
But yeah, I'll probably show that now after I solve one or two questions. Okay, the contest is starting. Damn, I didn't even register. Got it. 1-0. Good luck, bro. Good luck. Join now. Let me join you, bitch. Hmm. My screen is hidden, right? Yep, it is. Yeah, let's go. Okay, rate limited. Yo. No, not rate limit. Okay. We're given an integer array nouns consisting of a pair of indices and nouns to return the minimum absolute difference between I and j among all valid pairs. Hmm. Okay. Yo, I might feel like I'll probably fuck up in the first question itself. If I equals to 1, then you can say L equals to -1. R equals to I minimum between answer, comma, absolute of R minus L. That's it. The difference between indices, right? Answer equals to int max. Yo, we gotta be fast with this bullshit question. 2 and -1. Would it work? Would it work? Yo, Ellie. Yeah, I think nums 2. Yeah, I think this should work. Let's go. Let's go, bro. Why am I celebrating? This is the first fucking question. What? We're given three integers n, pos, and k. There are n people. Bro, my screen is hidden. There are n people standing in line from 0 to n-1, each person independently. Okay, n people. L visible only to the people on their right, R visible only to the on their left. A person I less than push is visible if and only if they choose L. What? A person I greater than position is visible only and only if they choose R. Position के right में सिर्फ R होने चाहिए, left में return the number of possible directions. Assignment says that the person at index pos sees exactly k people. Index 0 is to the left of position 1 and index 2 is to the right of position 1. To see k equal to 0 people, index 0 must choose R. A person I which is less than position is only visible if they choose L. अच्छा, position के left पे L होना चाहिए, right पे सिर्फ R दिखेगा. Absolutely. Okay, bro. I think we might need Excali for this. So basically, you're given a point, right, and you're given bro, this fucking PNC bullshit. 10 raised to 5. Okay. Wait. We have two sides here. Let's say if we want. If we were to place, let's say, 3 R's here, then those 3, everything
Besides that, okay. Okay, we have to put, basically this is nothing but picking three positions out of X positions, right? What is that, combination or permutation? So that's combination. So that's 3 by 4, right? So out of 4 you need to pick 3. So 4, 3, 2, 3, 2, 1. That's 4C1, right? Yeah, that's combination. That's combination basically. Bro, is there a formula for combination? Bro, what the fuck? Formula for combination in CPP. Yeah, it's this, right? We'd have to, yeah, we have to, fuck it. This is what? GCD combinations? They created a formula themselves. 3 there, 2, 1. 3, pick out of 5, pick 2. 5C2. Out of 5, pick 2. 5.4 by 2, that's 10. I guess we need long everywhere. Hmm. L combination XCK, right? XCK, XCK, LLX. Okay. Damn, bro, this is 5C3. Yo, I'm cooked in the second question. I always fuck up in maths, bro. These exactly K people. That's fucking crazy, bro. The formula is n factorial by n minus r factorial, right? NCR. 5C3. So 3 तो पूरा तक चलेगा. Gets L. Bro, is there a factorial function in CPP? There is no. Yeah, I'm cooked in the second question. 1000%, bro. My rating. I guess I need to implement it from scratch. I always get fucked up in the. How many people solved it? 200. 200 already solved it.
Yeah, it is definitely game of combinations. 10 raised to 5. 10, 10. Fuck it. You know what? Let's do it. To calculate NCR, NCR. Mm, bro, this is gonna give me a fucking TL. Yeah, I know it. LL answer equals to. Mm, this is. Yeah, this question is all about not getting fucking int overflow and not getting. Yeah, I'm cooked. I'm cooked. Yo, real Jimmy, what's up, bro? What's up? Yeah, I'm cooked. This question is all about not getting TLE and not getting an int overflow. You know what? Fuck it, I'll solve it. I'll solve it. Up would be up would be let's define also mod, bro. Hashtag define mod as 1e9 plus 7. No, that wouldn't work. Constant int mod equals to 1e9 plus 7. Now what we want, we'll calculate numerator and denominator differently. Yeah, LL up temp would be n, LL down temp would be r, while down temp is greater than 1. While down temp is greater than 1, it's actually greater than 0. Mm, star equals to up temp down percentage equals to mod. Yeah, I'm cooked. Oh, fuck me. Return LL answer equals to up by down. Return answer. Fuck this question, bro. Fuck whoever made this question stupid. Yeah, okay. Man, I already feel like quitting. Yo, I need to. Now we have the combinations counter. What we need to do is that with that multiply. Bro, this question is n is the total number of people. If position is 0, then how many people exist on the right? And right would be n people, 0 to n minus 1. Right would be total minus position, n minus 1 minus position. Yeah, and left would be n. mm, yeah, left would be just position.
what we can do is, bro, this, yo, am I stupid or is this question just 580 people? 580 people have done it already. You're given an, you start at and want to reach the bottom right cell. At each step, you may, the cost of a path is defined as the bitwise XOR of all the values in the cell, including the return the minimum possible XOR values. Yeah, I'm cooked in. Yo, I quit. I quit, bro. I quit. I genuinely quit. I have no clue about how to do the third question. The second question is cooking me. Holy shit, bro. Today I'll lose a fucking minus 500 or something. Bro, I need to concentrate, okay? You know what? We don't give a shit about rating. It's all about doing DSA. Yeah, nobody cares about rating. Chill out. So you'll start with R and L, and they should be equal to n minus 1. Now what you can do is R plus plus L minus minus. I'm so damn. I'm pretty sure I'm understanding this wrong. What? Oh, wait. Right position, left position, left spaces, right spaces. Now you delegate how many you want in each space. Okay, that's just the space. If we want, let's say if n equals to 0, n0 or I need to calm down, bro. If we have 3 spaces and we want 5 people in total, can go 3 here, 2 here. We can't go 4 and 1. That would be wrong then. Three and three. Possible directions such that the person at each index sees exactly k people. Hmm. So now you can calculate the c values. What you want to do is you have LCR, RCR, R1 and R2 should be equals to what? Should be equals to k. R1 and R2 should be equals to k. R1 will go from 0 to 0 to minimum between L comma okay. N equals to 0, return 0. Okay. R1 will go from 0 to minimum between L comma k minus L comma
K, that's it. L comma K. R2 would be okay. Okay. Int left peeps would be 0. Int limit would be minimum between left spaces and K. Okay. Now we can write a do and then while left peeps is less than limit. Okay. In here what we can do is int right. Yo, I am so damn bad at maths. K minus left peeps. Okay, we got it. Wait, again, why are you going int? It should all be LL. Okay, right peeps would be K minus left people. Now, their LL temp would be combination of left spaces, comma left peeps. This star temp 1 would be ठीक है, temp 1 इतना रखो आप. Okay, LL temp 2 would be right spaces, right peeps. Now temp, LL temp would be there. Let's also temp 1 percentage equals to mod. Yeah, this is my last Leetcode contest ever. I quit after this. I'm not even joking. Temp would be temp 1 star temp 2. Answer plus equals to temp. Answer percentage equals to mod. Return answer. Did I do something? I wrote some logic. What? Bro, what? I guess my do while syntax in CPP. Or you know what? We can just change that. While left peeps is less than. Oh, I did not even write a terminating condition. Wow. While left peeps is less than limit, less than equal to limit. Okay. And then you just say left peeps plus plus. The fuck does it want now? While left peeps return answer. What? Yellow. Oh, this. Left spaces. Okay, wait. Wait. This minimum between left spaces and K. Oh. Wait, bro. Answer plus equals to. Okay, we didn't even declare answer. For the first one, we're getting 1. Second one, 2. In the ass. Okay, wait. See out. Left peeps. Yeah, at this point I know my rating is down the nali. I don't give a shit about my rating anymore. I just want to solve this question, bro. 0 0.
क्योंकि k ही 0 है। ठीक है भाई। ओ, the person at index 0 can choose position equals to 0 to the left or right of position equals to 0 to see k equal to 0 people. Ooh. So ans okay. This is another condition in it. 2k people have solved it. Bro, am I stupid? Yo, for the second one, n equals to 3, matlab 0, 1, 2, position would be 2. How is my right? Okay. My right peeps. Let's not cry, bro. We will solve it. 1 crore% I will solve it in the contest. No matter if it takes me like 1 hour, 2 hours, I will solve it right now. LL, right peeps. Let's put the minimum value. Yo, I can't solve it. Let's take a 2 minutes break wherein I won't write a single line of code. I will only and only think about the approach. So we are given a position, number of seats. Now first we have to find the how many positions at left and right exists. Okay. Let's see out left spaces, right spaces. This is a crazy question for a second question, to be honest, but you know what? Yeah, we'll beat what? Okay, if I left spaces, bro. This question. Okay. See out left spaces, right spaces. That's it. End L. First, let's see. Are we getting the spaces correct? Position is 1, so 1, 1. Absolutely, that's correct. Position is 2, so there are 2 on the left and 0 on the right. Brilliant. So the spaces are being calculated correctly on its left and right. Absolutely. Now, how the fuck did 2.4k people do it? Chill. Now, it's about, okay, it's pretty straightforward. I don't know, what am I? Yeah. Let's try to bring this as 0, or the minimum value would either be 0 or let's just bring this as the maximum value, right? If we, let's say we had 1 2 3 4 5 4 आने हैं तो इसका मिनिमम 1 होना चाहिए. और let's just do, yeah, let इसकी maximum value would be left spaces or minimum between left spaces, left में कितना space है versus k. ये इसकी max value होगी. This would be its max value. So let's say यहाँ पे अब मैंने fill कर दिए 2,
टोटल थे आपके 4. सो राइट में आपका होगा राइट हीप वुड बी 4 माइनस 2. एब्सोल्युटली, व्हाट द हेल इज रॉन्ग देन? ठीक है, लेफ्ट पीस राइट पीस कैसे आपके के था आपका 0, उसको 0 दिखने चाहिए. ओ, मैं के से कंफ्यूज कर रहा हूँ. ओके ओके ओके, आई एम कंफ्यूजिंग. ओके 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 ओके. के इज द नंबर ऑफ पोजीशंस एट ईच साइड. ओके, उसको 0 दिखने चाहिए. मतलब ये है, क्या है मतलब भाई, क्या है मतलब? उसको 1 दिखना चाहिए, तो वो 1 लेफ्ट में जा सकता है, राइट में जा सकता है. ओके, उसको 0 दिखनी चाहिए. ओके, उसको 1 दिखना चाहिए. 0 एंड 1. ओके 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 ओके, उसको 1 दिखना चाहिए, तो वो 1 दिखने वाला बंदा है, तो लेफ्ट पे हो सकता है, राइट पे हो सकता है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. उसको 0 दिखनी चाहिए, वो बात अलग है. अबे भाई मैं यो डीपी, इट्स अ कॉम्बिनेटरी क्वेश्चन. आई नो ब्रो, इट्स अ कॉम्बिनेटरी क्वेश्चन ब्रो. रेटिंग के बारे में तो भूल जाओ भाई. आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट रेटिंग. बेटर आई शुड गिव CF scan. It's a combinatory question, bro. Things in terms of PNC, exactly, bro. This is PNC. Chill, chill. ठीक है, उसको 0 दिखने चाहिए. मतलब लेफ्ट में फिक्स्ड है, उसके राइट में फिक्स्ड है. ओके, सो दैट इज द बेस कंडीशन. इफ k इक्वल्स टू 0, रिटर्न 2. वो तो बेस कंडीशन है, ठीक है. ये तो हटा दो, k इक्वल्स टू 0, सॉरी. ये बेस कंडीशन है, ताकि वी डोंट गिव अ शिट अबाउट दिस. ओके, 0 वाले केस ले रखे. कितने हरामी है लीड कोड वाले यार, इन्हें पकड़ पकड़ के मारो. लुक एट देयर स्टूपिड टेस्ट केसेस. के इक्वल टू 0 वाले क्यों दे रखे हैं? अब के इक्वल्स टू 1, इसमें मेरा आउटपुट आ रहा है 2 व्हेन इट शुड बी 4, बिकॉज जो बीच की, हाँ, वेट, आई थिंक आई गॉट इट. वेट, इज दैट इट ब्रो? आंसर परसेंटेज इक्वल्स टू मॉड, इज दैट इट? 4 2 4 2. Now I need to, let's run a few of our test cases. Bro, can somebody give me a good test case? N cos k. Oh, I'll get a TLE. I'll get a TLE. Okay. I'm going brute force. Then LC P plus RC Q. Okay. P plus 1 Q minus 1. Ha, that's basically it. And P plus Q should be equals to star. Bhai, this is a maths question. This is a pure maths question. ठीक है, and L plus R equals to N minus 1. दे आर फिक्स्ड. एल और आर फिक्स्ड है, पी और क्यू बदलेंगे कि दिखने वाले बंदे लेफ्ट पे रखे हैं, राइट पे. आई विल गेट अ टीएलई. यू नो व्हाट, लेट मी ट्राई सबमिटिंग इट. 1 crore% आई एम गेटिंग अ टीएलई, बट लेट्स स्टिल.
An ordered map which contains string and int hash string key would be n toString n plus toString r if hash dot find key is not equals to hash dot end, return hash of key. Do the same for key too. If hash dot, you know what, fuck, whosoever made this question, I'll find him and beat his ass. In the end, we just store it. Hash of key 1 equals to answer hash of key 2 equals to answer. What? Oh, 1000% we're getting a wrong answer. 1000%. 242. There's no doubt about that. We're getting a wrong answer. I just want to see the goddamn test case. I hope I'm calculating the. How many? 20 test cases, 30 test cases, 40, 50. I knew it. Don't spam. 1450. Do we give up? Gave up, bro. Bro, third is basic 3D DP. Yo. For 15 and 1, there are 10 visible. STD out, that's just spaces, right? Yeah, that's just spaces. Temp1 star temp2, temp star equals to more, answer plus equals to temp. Why did it not work? I mean, I still don't get it. It's not TLE. What is the expected answer? 2002. So I can have 10 people on the right. And what is the value of 10? See out key NCR value. Okay. So एक में से शून्य उठाना is 1. 13 में से 10 उठाना is 10. कैसे? 1098 upon 13. Is that correct? Bro, why did I get a wrong answer then? 715, 725, 1450. Expected is 2002. Yeah, fuck this question, bro. We're going on third question.
Don't waste time on second, do third. Bro, you're right. You're at the top left cell and want to reach the bottom right. The cost of path is defined as the bitwise XOR of all the values in the cell path. Return the minimum possible XOR among all valid paths. What was XOR? Fuck, bro, I feel so messed up. I want to. Okay, XOR was nothing exclusive or. So 1 1 and 0 0 was 0. Right, and yeah, 1 0 was 1. To minimize the XOR, we need to add as many as of the same numbers as we can. Right? XOR is the inverse of its XOR. 1 XOR, 2 XOR, 4 equals to 7. Wait, it's just 1000. Okay, okay, okay. Yo, in here, so I think we need to keep track of what? That's it? Wait. Hmm, I mean, what's so special about Zorka? Is this like straightforward DP? I can't get it. Two valid paths, 1 XOR 2 and 1 XOR 4. Bro, I don't. My brain has stopped working after that second question, chat. The worst contest ever. The worst contest ever, bro. But what's so special? Is this just what? If your I equals to m, or n equals to j equals. Now go down. If I plus 1 is less than m, then we go down and solver would be, and answer would be error I j XOR the value of solver error I plus 1 comma j, and then answer equals to minimum between answer comma 10. Do the same for going right. Bro, what's the catch here? My brain has refused to work now. J plus 1. Now we just return answer. Is that what this question is asking?
There has to be more, right? Bro, what? Use of better. Chat. Kill me. Now, why am I getting int max as the answer? Solver of grid 0 0. Oh, yo, I'm not joking. I, J, M, N. I plus 1 is less than M. Then we go I plus 1. J plus 1 is less than N. There are two valid paths. What is wrong with me today? The cost of a path is defined as the bitwise XOR of all the values, including the start and the end cell. Of course. Yo, I plus 1 int answer equals to int max. Then we are minimizing it into temp. XOR ऑपरेशन यही तो होता था. Yeah, XOR यही तो. You know what? Might just be temp XOR equals to error ij. Is this the issue? Temp XOR equals to error ij. I actually don't understand. ओ XOR की वैल्यू ओके अगर आप ये रखोगे तो आएगी ना बेवकूफ. For XOR you just keep it with 0 यार. थर्ड में 0 आ रहा है. इसमें अब हर जगह 0 आ रहा है. ओ अच्छा 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 ओके ओके ओके. If found yeah, my brain is just not working today, bro. I'm sorry. I know people must be laughing at me in the chat right now. Answer equals to temp. We're getting fun. What am I doing today? Bro is overthinking so much. Bro, what am I doing? Two XOR, 7 XOR 5 equals to 0. Why is my value coming as 5? How is that possible? This is answer equals to temp. Oh, okay. Still coming at 5. Yeah, I'm cooked. Chad, I think I might need to retire.
I'll give up my night title. I need to retire. Uncooked 275. So we starting is false. In the answer equal to 0. Answer becomes temp and found equals to true. And if it's found, then you take minimum between answer and temp. Else, answer becomes temp. And then you return answer. Yep. Oh my god. Oh my god. Oh my god. The error I was doing. Oh my. You know what? This is still wrong. This is still wrong. Vector in dp. If dp of ij is not equals to minus 1, return dp of ij. Yeah. Hmm. I, I just don't want to. Okay. Imagine if this still is wrong. If this still is wrong. dp dot resize m comma vector in is going to be of size n comma minus 1. dp of I j equals to 1. So we're getting 6, 9 and 0. Please, I beg you. What? Yeah. Bro, I give up. Today is just not the day. Today is not the day. Holy bro. I feel like, yeah. So in here, 11, 10 and 4, yeah. It was definitely not straightforward DP. I don't know what am I doing. I need to think for a minute. We have 37 minutes left. That's still more than enough. Define as a bitwise order of all the values in the cells along that path, including the start and the end cells. It would be, yeah. I feel like just because I'm not practicing, bro, I have become so bad. It's crazy. I've become so bad, it's crazy, bro. Just because I'm not practicing. Bro, you will kill yourself after seeing actual solution. Bro, you know what? I might kill before seeing the solution. I might kill before seeing the solution. Ansh, bro. I feel like I had a better chance at 2. 2 still makes sense. In third one, I can't even gather. Like, how is it? In third one, do we care about the bits? Like, which all bits are set? I mean, why do we even care about that? We can just see, na. I think, yeah, let's try on second one. Imagine doing a contest with only one goddamn question. Yeah. Today I'm getting a minus 50. इसमें क्या गलती आ रही थी? Let's focus on this. 2002. 15 seats है. One position fixed है. आपको 10 लोग दिखने चाहिए. Okay. So the question was 15 seats है.
there are 15 seats. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15. Okay, and the first seat is occupied. Now, अबे एल आर का भी तो खेला. Now you have to see 10 people. So 10 people. इधर what we did was, आप एक इधर दिखा सकते हो, एक 9 इधर दिखा सकते हो. आप क्या कर सकते हो, 0 इधर दिखा सकते हो, 10 इधर दिखा सकते हो. यही दो केस हैं. यही दो केस हैं. अब राइट में सीट्स कितनी होगी आपकी? 13, राइट. 13 सीट्स है. 13 सीट में से 10 ऐसे बंदे उठाने हैं जो आपको दिखाने हैं. ठीक है. मल्टीप्लाई दैट विद वन ऑन लेफ्ट. ओके. 0 10. एक में से आप 0 उठा रहे हो, 13 में से. एनसीआर वैल्यू 10 कैसे आई यार? वेट, am I calculating? 13 10 factorial, 13 12 11 10 9 8 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 10 10 6 बात 4. 13 12 11. I found the goddamn error. वैल्यू गलत क्यों आ रही है? It is, yeah, it is similar to 13 by 3 2 1 13 11 10. चार तक कटा है ना. 13 12 11 11. Yeah, it's 13 12 11 by 3 to 1. 3 to 1 is, this would become 6. My values are wrong. My values are goddamn wrong. 13 C 10. अच्छा. 13 10 की वैल्यू गलत आ रही है. अब इसमें क्या हो रहा है, ये अप ले रहा है n, डाउन टेम्प ले रहा है r. u becomes 1 while down temp is greater than 0. आप टेम्प को माइनस कर रहे हो, आप डाउन टेम्प को भी माइनस कर रहे हो. अप बाय डाउन. Why are my values being calculated wrong? What? लॉल मेरा 2 हो गया, 3 भी हो जाएगा, बट मुझे डीपी नहीं था, प्योरिकल से सॉल्यूशन पास नहीं हो रहा. I feel like removing my wig right now. We need to catch up our ratings in tomorrow's contest or we are doomed, bro. We are doomed. We are goddamn doomed. Combination formula. What was the combination formula? N factorial about n minus r factorial, right? You know what? Let's just, yeah, let's write a factorial function. In fact, do nah, bro. Factorial can become a bit too big.
Okay, LL factorial of int x. Kill me. No way. I don't share the solution here. Yeah, bro, let's not share the solutions here. I have found the error, the logical error, but what wrong is happening in my code? N equals to 0, n equals to, up temp would be n, r, down star equals to down temp. Mhm. K, R, T. And it's NCR, right? Yeah. 13 में से आपको 3 उठानी है तो 13, 12, 11, 3, 2, 1. Up star equals to up. Oh my god. Can I delete this stream, bro? Can I delete this stream? हो गया काम भाई. Can I delete this stream? Thumbnail देखकर लग रहा stipend आ गया. Bro, it's because my channel got monetized, but the worst fucking contest. Which do I even focus on now? On the second or the third one, bro? How many people solved the third one versus how many solved the second one? Which do I even focus on? It's just 30 minutes. 7,000 solved the second. 6,000 solved the third. Okay, chill, chill, chill. Is there a combination function? Combination function in CPP. And factorial, but those factorials can become super big, right? We can't calculate them. Factorial n by factorial r upon factorial n minus r. But what if the factorial, those n values can be huge? Okay, I think let's just do LL factorial. Let's just write a factorial. I less than equals to x, I plus plus, answer star equals to I, and answer percentage equals to mod. Okay, this will calculate our factorial. This will calculate our factorial. And what if we change all this logic? All this logic to LL answer is nothing but factorial of n. A is factorial of n. LL n factorial upon
what was it, n factorial upon r factorial ll n r factorial would be factorial of r and ll n minus r would be factorial of n minus r. Answer would be n factorial divided by r factorial answer r factorial n factorial. What? I less than equals to we don't have answer defined. Oh, answer would become n factorial 2 to yeah, I give up chat. This bro, sometimes we just need to give up on life. I guess this is that day. We need to give up, delete your ID, quit Leetcode. Yeah, just never open this goddamn stupid website ever again in your life. I don't know what's the logic behind this. I don't know what the error here is. Just just kill me. Yeah, genuinely. We don't need this. We don't need this. ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. N equals to 0, R equals to 0. तो मेरी दुनिया. अबे मेरे को ये बता, 13 10 में आंसर 10 कैसे आ रहा है? मेरे को समझा दो प्लीज प्लीज. एन फैक्टोरियल निकाल लिया आपने, आर फैक्टोरियल मैंने. एक मिनट. 1 स्टार 10 होगा, नीचे 26 होगा. ब्रो व्हाट डिड आई इवन डू? Chat, crazy contest. This humbled me like nothing. I have not been practicing, bro. Let's be honest here. Let's be honest here. दिल्ली वाले होकर एनसीआर वाले क्वेश्चन नहीं हो रहा. थर्ड इज मिनिमम 5 सम क्लासिक डीपी स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट की जगह. यार वही तो कर रहा हूँ. व्हाट द हेल एम आई डूइंग? दैट्स द रीजन आई नेवर स्टार्टेड यो 9 AM games, bro. I might need to fight you. I might need to fight you. Bro in third, भाई second नहीं हो रहा. ये मैं क्या हो? It's insane. I'm still stuck on this question. Basically, we want to calculate 13C10, right? हाँ, ठीक है, combination. 13C10. 13C10 is basically 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 13. So that's 13, 12, 11, 3, 2, 1. ठीक है, ये गया आपका 6 पे. ठीक है, ये गया आपका 2 पे. ठीक है,
13 टू ज़ा 26, 26 इंटू 11 करोगे आप तो एक बड़ी वैल्यू आएगी ना। 10 कैसे आ रहा है मेरे को बता दे। टेन कैसे आ रहा है मेरे को बता दो, मेरे को मार दो भाई। थर्ड में 830 पास हुए, सेकंड तो समझ नहीं आया। यो एग्जैक्टली इची गोकुरो ब्रो, एग्जैक्टली थर्ड में नॉर्मल डीपी कैसे लगेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ब्रो, नाइट के रोहन गेमिंग ब्रो, दैट्स द एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन। थर्ड में भी डीपी गलत हो रहा। रिटर्न द नाइट बैज ब्रो, ब्रो डू वी रिटर्न द नाइट बैज, डू वी रिटर्न द नाइट बैज। थर्ड 3v 3d bro, I think I might have to retire and return the night badge. This this is embarrassing. Division में modulo, I guess हाँ, division में modulo might be also a stupid thing. n factorial r factorial से divide करा, n minus r से करा, तू हाल turn it modulo star 7. I guess हाँ ऊपर यहाँ modulo use नहीं करना. This is बढ़िया. Then we are gonna get a int overflow. अब आंसर सही आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इफ आई सबमिट दिस आई एम गोना गेट एन int overflow 1000%. आंसर सही आ रहा है, बट वी आर गोना गेट एन int overflow, राइट? टू 86 exactly. You're gonna get an int overflow for this. Answer might be large. Yo, 10 raised to 5. In the worst case scenario, you know what, let's submit it. एक बारी देखते तो है कितने गलत चल रहे हैं, कितने गलत चल रहे हैं. Let's see bro. You know what, I might just get int overflow. 100% overflow तो आएगा. I just cannot calculate factorial like this. That is not safe. We can't do that. But let's still see. Why did I make this stupid extension? अबे int overflow नहीं, उससे पहले ही गलत आ रहा है. उससे पहले ही गलत आ रहा है. Bro, feeling very bad for you. मैं करना से रहा था, सोचा पुलिस भाई ने तो आज मचाया होगा, आके पता चला. Yo, bro, use modulo inverse. Damn, ड्रेड ने बताया तो था कुछ मॉड्यूलो इनवर्स. अच्छा वो आता ही नहीं है. दैट्स इट वी कांट डू सेकंड. लेफ्ट में से कुछ विजिबल चूज करो, प्लस राइट में से बाकी चूज करो. पोजीशन का स्टार का दो ऑप्शन. एग्जैक्टली जस्ट यूज सम टेम्पलेट फॉर एनसीआर यू गेट ऑनलाइन ब्रो. आई डोंट थिंक सो दैट्स करेक्ट. मॉड्यूलो इनवर्स, अच्छा ड्रेड ने बताया था. ओके, मॉड्यूलो इनवर्स तो आता ही नहीं, वो तो आता ही नहीं. ड्रेड ने बताया था, वी स्टिल डिडंट लर्न इट. अब भुग तो, अब भुग तो. You have 15 minutes. See if you can solve the last question. ये मोनोटॉनिक तो है नहीं, कभी भी बढ़ता है कभी भी घटता है. हमें देखना क्या होगा.
Yeah, you know what? I think, yo, wait, wait. What we can do is, what we can, नहीं होता है यार. What am I doing? क्या है इसकी? It's just 1000. Yeah, I think we can do that. We can do that. हर पॉइंट पे नहीं आता भाई. Can't solve 2 and 3. Hop on Discord after this. भाई इसके लिए तेरे को क्या प्रॉब्लम करना चाहिए था एग्जैक्टली. हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है. यो पीपल मजा करेंगे. ड्रेड ब्रो, you're talking on मजा करेंगे and I couldn't solve the second and third question. Bro, this guy, 13 minutes. 13 minutes. What I'm thinking is, इसके लिए we'll just return this. इसके लिए we'll also return this. इसके लिए return this. इसके लिए we'll return this and this value. हाँ, vector int solver return अब यहाँ पे आएगा वेक्टर इंट आंसर. अच्छा, वेक्टर इंट आंसर. अब आप क्या करोगे? टेम्प से आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी. अब आप क्या करोगे? फॉर इंट एली ऑफ योर टेम्प आप करोगे वुड बी एली जॉर एरर आई जे. अब आप क्या करोगे? You just put that into the vector. Answer dot push back x. Do the same here. For int le of your temp, int x would be le zor your current value, okay, and put that into array. Answer dot push back your x. That's it. Return answer. अभी अभी आप वो भूल जाओ यार, मेमोराइजेशन भूल जाओ. ठीक है, you don't need memorization. Vector int answer. Now, le x equals to minimum between le comma x. Return x.
आंसर क्या आ रहे हैं? 6 9 0 चौथे में 5 आ रहा है when it should have been 5. Okay, it's working, but I have not memorized it and I have 10 minutes and I'll chill, 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 bro. Chill, you can do it. Chill. Unordered map of let's do string comma vector int dp, but we'll have to make a string. Okay. String key would be to string I plus to string j, right? And now we just do if dp dot find key is not equals to dp dot end, return dp key, and in the end just do like dp of key equals to answer. God please, God. Okay, dp दो चीजें क्यों बना दी? ये हटाओ. God please, God. It's working. 6 9 0 5. It's working. Please, please. Bro, memory limit exceeded. These bro, memory limit exceeded and we have 7 fucking minutes, bro. Can we store a set in CPP? Set, right? Let's just use a set. What was the syntax for set, right? Set and yeah. Rather than doing this, let's say it returns a set. How to iterate set, bro? How to iterate a set in CPP? It was auto IT, right? Yo, I'm so ass. Yeah, int element and my set. But constant int. Okay, that's correct. So we'll just do set of int, Bro, does this work? What? Oh, okay. Set of int answer dot pushback, answer dot insert output is 0. What was the question? Output is 0. Bro, these assholes didn't even show me the expected output, but it's working. 6 9 0 5. Please, 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 please. Time limit, exceeded. Bro, despite hashing, I'm getting a time limit exceeded. Despite hashing, we are getting a goddamn time limit exceeded. Yeah, you know what, bro? We fought. Yeah, laugh, bro, laugh. 9 a.m. games. The shameless you are. Use unordered set. Okay, let's try unordered set, bro.
unordered set. I think I might just be doing the wrong logic, bro. You guys might think that I'm doing the right logic, but you know what? The stupid asshole that I am. Unordered set. We can't even use this test case. Can't even use this test case. DP key equals to answer. Please. 935 out of 999. Yeah, we take DL, bro. We take DL. Yeah, Goku. Bro, Goku. You सब हंस रहे हैं तुझ में ही दिख रहा हूँ. Use 3D DP, remove the set. In my set, what is bro talking about? Use 3D DP, remove the set. I'm returning an unordered set. What? What even is the third dimension here, bro? What even is the bro? One question out of 4 questions hidden for this test case. What even is the goddamn third dimension? Yeah. I'm deleting my Leetcode profile, bro. Mine too, 1/4. Arman, bro, you're my brother. You're my brother. You know what? At this point, let's just submit it as many times as we can. We don't give a. Yeah, I'll keep submitting it. 930. Wait, it increased, right? Last time it was 935. This time also it's 935. I thought today it would be a happy stream. My channel got monetized. It was a good Saturday, and I couldn't even do the second question today. Wow. Not the second question. Forget about the third question. How the hell does the third dimension come into picture here? My stupid brain. So at every point I am seeing कि नीचे क्या क्या zor बनेंगे, and I'm storing them in a set and returning them. Third dimension क्या है भाई यहाँ पे? Third dimension is the set? No. 3D DP. I don't know what bro is yapping about at this point. 1 minute 30 seconds, bro. Hairline reveal. RN Sivaj 3962. Just tell me your address once, bro. I want to meet you. W for monetize, L for you. Tomorrow we rise. Bro, who the hell said that I'll be giving tomorrow's contest? Who the hell said? भाई जिस तरह की तरह सोच भाई अब मेरा दिक्कत पता क्या है ओके दिक्कत पता क्या है I yeah chill. I have not been practicing Leetcode. I have not been practicing. Delete ID, bro. Vedant Pandey. Bro, shut your bitch ass up, bro. Delete ID. The problem is, I have done all kill Chand Pappiya 9016. That's cool, but when did I ask? When did I ask Chand Pappiya, bro? Why खेल खत्म rank phone number के ऊपर you know आपका -30 हो गया data structures. -30 is not bad, bro. Third dimension is the Zor value of the left or above for which the pahat exists. Not you have stopped Leetcode. Doing only Leetcode would help in increasing ranks. Yeah,
Yo, bro, where's my camera? Bro, are we looking? Yo, Shaitan brother. Bro, Shaitan. We got our party budget increase, bro. Shaitan sir, thank you for the first ever super chat on the very day that I got you. You know what this looks as? On the very day that I got zero. I mean, not zero. One question out of four. Brody salute. Yo, thank you, bro. You don't have to do this, but thank you, Shaitan brother. That's crazy. That's the first super chat we've gotten. Yo, bro, thanks. But it's just for the first time super chat. At least we have something to be happy for. Yeah, at least something. इसमें से 60 रुपए YouTube ले लेगा, bro. Okay. Did the contest end? It did. Do we? Yeah. Again, thanks, Shaitan, bro. You don't have to do it, but thanks so much, bhai. Thanks so much. अब हर contest में एक ही करेगा. मन, you know that's actually smart. Entrant hub check हो जाए. Ichigokuro, shut up. अबे अब क्यों फां चल रहा है? Okay, somebody please teach my stupid ass how do we do lead code. That's it. I don't even want to do development. कौन से channel से YouTube से किया bro? भाई कुछ नहीं कर रहा मैं आजकल. You look like stable Ronaldo. मैं ना brave. Yo, thanks bro. आज तो I have to be brave bro. Stable Ronaldo. Who's that? Who's that bro? Not at all. The fuck do you mean? Not at all. Today I will eat all your guys. Delta, negative delta, chand papiyan. Bro, come into Discord. We want to talk. Another super chat. Data structures with 20 rupees. My brother. ये सारे पैसे आईपीएल में लगेंगे अभी आईपीएल में सट्टा लगेगा. No, I'm joking. But somebody, I need somebody to explain me, bro. भाई सोचा था गार्डियन बनूंगा, नेगेटिव लग रहा. Yo, we're not even discussing about guardian now. Let's just hop onto Discord and somebody teach me what the hell did I do wrong. मजा करेंगे. Dread bro, Dread. आज मजा करने का दिन नहीं. I will help you. Please do. Iterate over all possible Zors and said mine is accepted after 4 TLEs. Competitive programming, that's exactly what I'm doing. See, I'm returning a set or possible Zors. How the hell did yours get accepted, bro? Super chat आ गई, खुश हो जाओ अब. Thanks brother, thanks bro. 400 lead code हो गया. Yo, can somebody should we check एक ही हुआ solve. Shantanu Gavekar, you are my brother. Let's check entrant hub, bro. Let's be a man. Let's become a man, and let's check entrant hub. What? Shut up, bro. Let's check entrant hub and be a man. We can't cry about like this. Biweekly contest. This was which contest was this? Biweekly 179, right? Yeah. Whom do we check first? Shaitan, bro. Shaitan, brother. Plus, he did a fucking all kill. Plus 24. Is my screen blurred? No, it's not. A goddamn all kill by the legend himself. Today, see, I'm a fake knight. I've realized. Entrant hub में मत जा super chat आएगा वो भी -200. My rank is greater than 100 and less than 1000 chand papiya, bro. Come into Discord. I want to talk to you. Come into Discord. Bit set. What do you use 3D RADP instead of unordered map DP? What do you mean by that? Okay, bro. I guess we need to. Let me bring my screen here so we can see how much rating everybody is gaining or losing. 404. Who else, bro? I won't check mine. 404, not Utkarsh. I gave contest from wrong account. Yep, exactly. That's what an unmanly human does. If you're using a dummy account to give contest, bro, you're an unmanly human.
-9. That's my brother. That's what we like to see. 404, not Utkarsh. Score is 3, similar to me. First question in 4.5 minutes. That's what we like to see. Nice work, bro. Nice work. That's what we like to see. Put it on top left. Yes, I did. भाई तेरा +2 हो रहा? +2? Are you? No fucking way. +2 कैसे हो सकता है भाई? That's crazy. Minus goddamn 32. My new rating would be 1884. Minus 32. My expected rating, according to my rank, should be 1772. Damn. Bro, should I give up the night badge? And that asshole Pradeep, he tricked me into checking my rating. Bro, should I give up my night badge? Bro, people are laughing. Yo, see, the people who are laughing, how much did you gain? How much did you gain? Yeah, Pradeep, you getting banned. Not even joking. You getting banned. Did anybody, bro, minus, yo, yeah, let's get on Discord, bro. There's no point crying about it now. We just, if you wanted to become stable guardian and all kill, then the answer is simple. Chord forces. Yo, yo, who the Chand Papia, bro? Please come into Discord. Who the hell does this? Dipin Grover, okay. Dipin Grover. That's what your name is, right? Dipin Grover -15. That's my brother, bro. 23 minutes to just solve the first question. That is what we like to see. -15. You know what? If you are in Delhi, I owe you a plate of momos. -32. Yeah, these guys are laughing, bro. Leon Edit and these assholes are laughing. These assholes are laughing. Chand Papia is a crazy name. Exactly, and all he does is goddamn spam the fire emoji. भाई तेरी आवाज को क्या हुआ है? Nothing? Do you think so? Don't give up, bro. It's just a contest, bro. I feel like giving up at this point. भाई 2 सवाल हो नहीं रहे और गार्डियन कैसे बनूंगा? Yo, we need to hop on Discord, bro. That's it. That's it, bro. That's it. Well deserved. Yo, okay. Let's just get on to Discord, bro. And the fact that it was monetized. Today was a stream where I thought we got monetized. Bro, I'm so ass. The reason is I'm not check my account. Crazy stream, bhai. Chill out, bro. Chill out. It's not a moment to laugh. I lost 30 goddamn elo, Gaurav. What is your rank? How much did you gain, bro? You laughing at me. How much did you gain? Tell me. You laughing at me? Okay. What? First gain rank, right? What is this guy saying? भाई टाइम पास ना करो, कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट चल रहा है वो करो. भाई बस देख नहीं लिया कॉन्टेस्ट में क्या हुआ मेरे साथ. देख नहीं लिया. Look at this Goku, shameless human, laughing with that emoji. Yeah, we are cooked, bro. We are cooked. Okay, let's just get on. Let's just get on Discord. We need somebody to explain my dumb ass what I was doing wrong. DSA maths test exactly, bro. Exactly. What was I even doing wrong? Second question should be banned. There has to be like an author page in Leetcode so that we can beat the ass of the human that made the second question. Second one is a maths question, bro. It involved inverse modulo. That's why I couldn't do it. That's why I couldn't do it. When the world need me, I will come back. Please come into Discord. Chand Papiya, please come into Discord. I gained +5. I laugh. Austin Richard. +5 isn't anything crazy, bro. Alright, gotta go. Time to do some active service. Okay, bro. Okay, let's get on to Discord. Discord link is in the description. Join. You know what? I might even share it right now. Copy. Let's just share the Discord link, bro. We need to pin it. Shit, what the hell did I do? Bro, pin this shit. Okay, let's get on to Discord. Let me turn on the virtual camera. Start virtual camera. Let me come on this side. Let's go, bro. This is crazy. ट्वेस्ट करना चाहिए था मैं
आज आज के कॉन्टेस्ट में बहुत सारे हेलो चीटर हैं, आज के उसमें कुछ ज्यादा ही पहुंच गए। भाई, क्या हो गया हार्ड ये? हार्ड कॉन्टेस्ट में चीटर होता है भाई, मतलब क्या ही बोल। अरे इसमें कुछ ज्यादा है, क्योंकि इसमें सेकंड क्वेश्चन लगता है तुम्हें बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे, वहाँ चैट में बंदे ऐसे ऐसे भाई बता रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन मेरी मैंने सेकंड क्वेश्चन देखा था, मैंने वो छोड़कर थर्ड क्वेश्चन पहले किया, उसके बाद सेकंड किया। सेकंड आसान ही था, थोड़ा पढ़ लो, वो आसानी हो अच्छा जाएगा। अच्छा यार इकॉन भाई, ठीक है भाई, ग्रेडी था ना इकॉन वो। भाई, इकॉन भाई प्लीज ऐसे ना बोलो सेकंड आसान था, प्लीज भाई ऐसे ना अबे बोलो। अरे भाई, ग्रेडी था भाई वो, ग्रेडी था अबे भाई वो। आसानी था भाई, यार अब ग्रीडी आसानी ग्रीडी था भाई। सेंटर में खड़े होके यार एक मिनट, कितने लोग एग्री करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन आसान था? कितने लोग हैं जो एग्री भाई करते हैं? भाई मेरे मैं में तो हुआ मैं नहीं, मैं तो मैं एक तो नहीं क्वेश्चन करता था। भाई। कोई नहीं मैं करता तो ना? नहीं करता भाई मैं। कोई नहीं करता ना? भाई तुमने अगर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा भाई हो तो आसानी होगा भाई, कौन सा थ्योरम? कॉम्बिनेटरिक्स का अब देखो भाई ये भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बात कर रहे हो? वो नहीं कोई नहीं भाई, सकता भाई उसको। 11th का मैथ्स था, 11th का मैथ्स था वो। अबे हाँ, बेसिकली भाई तो उसने भाई सी अबे पहले से ही बताया ना उसने भी। तू कॉम्बिनेटरिक्स से डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, उसके बाद जो हाँ लेट्स से वो XC0 into YCK प्लस XC1 into YCK हाँ में जो हाँ समेशन होगा, उसका अरे बस फॉर्मूला वो X plus YCK होगा। So अब उसके बाद into 2 कर लेगा, because for the POS person he has two choices, right? L and R. So 2 into n minus 1 CK। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए you have to use modular inverse, because समझ रहे हैं ना, डिवीजन हो रहा है। So भाई मॉड्यूलो इन्वर्स ही तो नहीं आता यार, पिछली बारी भी भाई आपने बोला था, मैंने सीखा ही नहीं। अबे मॉडुलर इनवर्स देख, मैं बोल रहा हूँ सुन, मॉड्यूलो करना होता है ना बार बार। नंबर थ्योरम में एक चीज होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉर्मूला लिटिल थ्योरम, ठीक है? लेट्स क्या से अगर क्या तेरे को बोलना है क्या होता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉर्मूला लिटिल थ्योरम, ठीक है? कौन सा थ्योरम? एक मिनट, फरमास। फॉर्मूला लिटिल थ्योरम, अरे नाम से पता चला। ओके ओके सुन, ओके भाई। अगर लेट्स से तेरे को बोल रहे हैं कि a by b mod p, where p is a prime number, हाँ ठीक है? तू करेगा क्या होगा बोल, तेरा a into इनवर्स ऑफ मॉडुलर इनवर्स ऑफ b, समझ रहे? अब फॉर्मेट से हम बोलते हैं कि a to the power p minus 1 is equal to 1 mod p, p is a prime number। a to the power p minus 1 is 1 mod p। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, a to the power p minus 1 equal to 1 mod p अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम। उसके Smashing बाद तू a thermals, same इनवर्स bro। करेगा, तो a to the power p minus 2 is equal to a inverse mod p। तो भाई एक बार बेसिकली इकॉन भाई आप स्क्रीन शेयर करके सिखाई दो यार, सिखाई दो। अरे यार ठीक, मेरे बस की नहीं। इनवर्स मॉड्यूलो कौन सिखा रहा है आज? इकॉन भाई सिखा रहे हैं क्या चल रहा है चैट में इस वॉइस में? इनवर्स अबे मॉड्यूलो रुको सीख रुको, रहे हैं भाई। अबे रुको सिखा रहा हूँ, रुक, मैं नोशन इनवर्स डॉक मॉड्यूलो देख सीख रहे रहा हैं। अभी तो नोशन में क्या वो एक्स कैली ड्रॉ वो होता है ना उस। हूँ। मतलब हाँ अच्छा, एक्स का ही रुको देखता हूँ मैं। भाई ऑल किल किस किस का हुआ इकॉन के अलावा यहाँ पे? इन वाले को क्यों भाई फोन आज करेगी इकॉन का भी नहीं हुआ भाई, आज इकॉन का भी ऑल किल नहीं हुआ। इकॉन इकॉन का भी नहीं हुआ? अबे नहीं, मेरा लास्ट में 3 आ गया, लास्ट में मेरा एक 63 टेस्ट केस ब्रो इकॉन का सार्थक जिसने भाई ऑल आपका किल मतलब करा है Q4 बता देना। जिसने खबर ऑल किल मैंने करा है, क्योंकि देखो भाई जिसने ऑल किल करा है साफ सीधी बात है बैन होएगा, सीधा बैन होएगा इस क्यों पे। भाई? क्यों भाई क्यों बैन होगा? भाई यहाँ पे यहाँ पे इतने बढ़िया लेवल के बंदे नहीं चाहिए यहाँ पे, हमसे एक क्वेश्चन से ऊपर हुआ नहीं, आप ऑल किल करके बैठे हो सार्थक भाई, ये कोई लॉजिक है? नहीं, अभी नहीं, अबे नहीं कॉन्टेस्ट वाला था यार, मैं ऐसा तो नहीं ये कि देख, बोली मुश्किल तो नहीं था नहीं। मुश्किल नहीं था। उपदेश लीड कोड करना छोड़ दिया तुमने, I इस mean, वजह से ड्रॉप हो रही रेटिंग। I mean, if it helps you feel better, मेरा फर्स्ट पे एक पेनल्टी आई है। मेरा सेकंड में पेनल्टी आया बिकॉज ऑफ वो वाला मॉड में नहीं किया। मेरे भाई मेरे यार मैंने तो पहला ही कॉन्टेस्ट दिया, उसमें भी रेटिंग कम हो गई। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वो होता है वो। होता है कॉन्टेस्ट इतना भयानक भाई, फर्स्ट कॉन्टेस्ट इतना वही भयानक, फर्स्ट कॉन्टेस्ट। इतना भयानक, that's crazy। एक मैं देख रहा अरे है पुलिस थर्ड वाले में थर्ड वाला कर देना। क्वेश्चन हुआ था भाई मेरे को कोई भाई, थर्ड पुदिश दिख रहा है एक्स का ड्रॉ मेरा। हाँ मेरे को ना भाई सीधा आप थर्ड सिखाओ, सेकंड तो मेरे को सड़ा हुआ क्वेश्चन सीखना ही नहीं है, अबे अबे रुको पहले Visible है, बोला है visible मैंने। थर्ड। अबे दिख रहा है बोर्ड? हाँ दिख रहा है भाई, दिख रहा है। हाँ इनवर्स मॉड्यूलो पढ़ाओ। हाँ ठीक है दिख रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। सो देख, बेसिक मॉडुलो फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन तो आता है सबको, राइट? इफ a प्लस बी मॉड m बोलता हूँ, लिख लेता हूँ a प्लस बी मॉड m, तो वो a मॉड m प्लस b मॉड m होल मॉड m, राइट? इजी, राइट? व्हाट इफ मैं बोलता हूँ कि a बाई, अबे यार
ए बाई बी होल मॉडेम अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, हाँ तो ये मॉड्यूलर चीज आपका डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता फॉर डिवीजन, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, हाँ मतलब तो प्रथम प्रथम भाई आप अनम्यूट हो, एको आ कदम रही है। म्यूट फॉर डिवीजन, ठीक है, ठीक है बोलो भाई। हाँ, सो ए बाई बी अगर मॉडेम मैं बोलता हूँ हाँ तो दिस इज नॉट लाइक, ऐसा नहीं बोल सकते कि ए मॉडेम बाई बी मॉडेम, ऐसा नहीं होता, ठीक है, हाँ तो इसका ऐसा होता है कि ए मॉडेम, ये समझिए, ए मॉडेम इनटू बेसिकली इनवर्स ऑफ, लेट्स से इनवर्स ऑफ बी, तो बेसिकली तेरा क्या होता है, जैसे मैंने बहुत सारा फॉर्मेट लिटिल थ्योरम होता है ना, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, हाँ भाई, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम होगा। भाई इस पे लिखना बहुत टफ पड़ता होगा ना कि अरे हाँ उससे यार 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 भाई आप मैं ऐसे, बोल रहा हूँ आप यार फॉर्मूला ही दिखा दो सीधा कहीं से। पिछली बारी भी यहीं तक सिखाया था और हाँ मैंने उधर आगे कुछ करा ही नहीं यार, मैं फेल हो गया आज, इसलिए आज सीधा अरे सिखा ही यार दो फॉर्मूला। रुक, मैं दिखाता हूँ, रुको, दिखा दो भाई। भाई यहाँ क्या चल रहा है ब्रो, वी आर डिस्कसिंग द कॉन्टेक्स्ट। सार्थक भाई से पूछ थोड़ी और कोई। वो मीट बना दे, गूगल मीट बना दे, इसमें बार बार अनम्यूट करना पड़ेगा ना, सब कर रहे तो उसमें सबको म्यूट कर दियो। अरे ये लोगों को मत रिपोर्ट कैसे करते हैं उस पे कॉन्टेस्ट पे? अरे वो तो ऑप्शन होता है, तुम वीडियो रिप्ले देखो उसके बाद रिपोर्ट कर लो, रिपोर्ट अच्छा कहाँ वहाँ ठीक है, अच्छा मैं थोड़े से कॉइन कलेक्ट अबे करके देखो, आता हूँ। मिलते हैं पॉइंट हाँ ठीक ऐसे। है, हाँ हाँ, अबे हाँ, 200 मिलते हैं। ओए मुझे तो फिर तो भाई सब लोगों काम पे लगो भाई। अबे नहीं नहीं, आई थिंक इफ यू इन द फर्स्ट 10 पीपल आई थिंक तब मिलता है, ऐसा तो नहीं ना कि सबको मिलता है, मतलब फर्स्ट 10 पीपल टू रिपोर्ट। या ओके ओके। अबे देखो देखो देखो, फॉर्मेट ये है, ये दिख रहा है, ए टू द पी माइनस अरे नीट बना दो यार, इधर बहुत सारे लोग अलग ज्वाइन हो रहे हैं, मीट पे ही बात देखो करते हैं। देखो देखो, मतलब मैं फॉर्मेट ये है, समझा नहीं, एक मिनट मीट में क्या हेल्प होगी भाई? ध्रुव सबको अब म्यूट कर कह रहा है सकते हैं इनकी बारी में। ज्वाइन हो रहे हैं ना बहुत सारे। ज्वाइन हो मैं रहे मतलब हैं। हाँ, तो म्यूट म्यूट का ऑप्शन अच्छा होगा ना, सो इसमें मैं भी समझा रहा हूँ, कुछ बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, अच्छा म्यूट अरे ऑन। वो मतलब सर्वर ओनर के पास होती है इतनी पावर तो भाई। अच्छा हाँ यहाँ पे भी होती है यार, मेरे को आता नहीं है करना बस। अरे नया चैनल बना लो ना, मेंबर्स लिमिट कर देना। अच्छा अरे यार तो एक काम अभी करना, कोई नहीं आ रहा, अभी कोई नहीं आ रहा, अब करो, अब समझा दो भाई। तुम्हारा सर्वर थोड़ा मैनेज कर लेना। अबे यार थोड़ा मतलब शांत हो जाए यार, मतलब थोड़ा चलो इतना ठीक है, डिस्टर्ब, ओके। एक मिनट, एक क्वेश्चन था बस, एक क्वेश्चन था सार्थक भाई से। प्रदीप पूछ रहा है, सार्थक भाई से पूछ, फोर्थ में डीपी विद सफिक्स ऑप्टिमाइजेशन लगाना है या कुछ और करना है? हेलो, सार्थक भाई वो लगता है उन्होंने चैट ही छोड़ दिया है। प्रदीप भाई कोई ना यार, फिर बाद में पूछते हैं। ओके समझाओ यार, समझाओ ही कौन भाई। भाई देखो, फॉर्मेट रील थ्योरम का बेसिक चीज ये है, ये जो दिख रहा है ना, ए टू द पावर पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंट वन मॉड पी, हाँ बेसिकली फॉर्मेट थ्योरम ये है, वे पी इज प्राइम नंबर, ठीक है, अब अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि वन बाई ए, लेट्स से ये चीज है वन बाई ए मॉड पी, वन बाई क्या होता है, ए इनवर्स, राइट, ए टू द माइनस हाँ वन, राइट, ये तो पता ही हाँ होगा, हाँ अब तुम ए इनवर्स दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, सो ये ए टू द पी माइनस टू कॉन्ग्रुएंट ए इनवर्स मॉड पी होगा, राइट, हाँ। हाँ, सो बेसिकली अगर तुम ए टू द पी माइनस टू मॉड पी निकालो, दैट विल बी सेम एज ए इनवर्स मॉड पी, राइट, अच्छा हाँ, अच्छा। अब तू मुझे ये बोल, लेट्स से अगर मैं तेरे को बोलता हूँ कि भाई चैट कुछ नहीं आ रहा क्या मुझे बोल रहे समझ। थे आप दोबारा? हाँ, सो बेसिकली ये फॉर्मेट थ्योरम दिख रहा है ना, ये ए टू द पी माइनस वन इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट वन मॉड पी, दिख रहा है भाई। हाँ, इसमें आपने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। हाँ, सो क्या होगा, ए टू द पी माइनस टू कॉन्ग्रुएंट ए इनवर्स मॉड पी, हाँ राइट, स्ट्रीम पॉज हो गई क्या? हाँ, सो अगर अगर बी बाई, लेट्स से हम बोल रहे हैं बी बाई ए मॉड पी, हमको ये निकालना है, ठीक है, हम्म हम्म। इक्विवेलेंट टू बी इनटू ए पी, राइट, इक्विवेलेंट इनटू। अरे अबे देखो, वन बाई क्या है, ए इनवर्स एंड ए टू द माइनस वन हो गया ना, हाँ हाँ हाँ, सो बी बाई ए सेम एज बी इंटू ए टू द माइनस वन, राइट, ऑब्वियसली। बी इंटू ए टू द माइनस वन मॉड पी, अब हम्म मैंने क्या बोला, ए टू द माइनस वन मॉड पी इज इक्वल ए टू द पी माइनस टू, ठीक है। हाँ, सो अगर लेट्स से तुमको बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन तो आता है, ठीक ना, हाँ आपने ही बताया था।
सो बेसिकली अगर मैं बोलता हूँ ए इनवर्स मॉड पी निकालने के लिए तुमको ए टू द पी माइनस 2 मॉड पी निकालना होगा, ये तुम कर पाओगे? पता नहीं यार मैं कर पाऊंगा कि अबे 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 ए टू द अबे तू 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 एक्सपोनेंशियल होता क्या है? ए टू द पावर एक्स, राइट? हाँ तो ए टू द एक्स माइनस 2 नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएंगे, हाँ, देन वही खत्म। बस ये था। बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये नहीं देख हुआ इसको मुझसे। इन्वर्ट, अबे इसको इसको मॉडल इन्वर्स बोलते हैं, समझ समझ गया? ओके भाई। अब जो, हाँ, अब जो सेकंड क्वेश्चन में था उसमें मैं एक्स का ड्रॉ में आता हूँ एक बार भाई आप इसमें। थर्ड समझा दो यार, सेकंड तो सड़ा हुआ है, अबे मैंने हाँ, तो समझना भी आ रहा हूँ। रुको रुको रुको, मैं सब क्वेश्चन एक एक करके समझा रहा था, रुक। जो देख तू मॉडल इन्वर्स सीख गया, राइट? समझ गया, राइट? हाँ हाँ हाँ, तो अबे यार रुको रुको एक मिनट। हाँ हाँ, सो जो मॉडल, तो लेट्स से तेरे पर सेकंड क्वेश्चन में क्या था, लेट्स से ये तेरा लेफ्ट है, यहाँ पर तेरे वो बंदा है जो पॉस वाला बंदा है, मैं पी से डी एंड, ठीक है? हाँ यहाँ पर राइट है, ठीक है? हाँ हाँ से हियर आर एक्स पीपल, ओके? हैंड राइटिंग को मतलब समझ जाना, बहुत मैंने टफ होता है। मैंने बताया, मैं बताऊं कि मैंने क्या करा उसमें, आप बताना भाई गलती क्या थी। हाँ, पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद कर लेना, ठीक है? चलो ठीक है भाई, ठीक ठीक है। है, ये पीओएस वाला बंदा है, तो यहाँ पर मान लो एक्स बंदे हैं, यहाँ पर वाई बंदे हैं, ठीक है? हाँ अब तुमको बोला है कि हमको के बंदे को देखना है, राइट? हाँ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट के अमंग दीज एक्स एंड वाई, राइट? बेसिक क्वेश्चन ये है। बिल्कुल। अब लेट से मैंने एक्स में ये वाला जगह में हम्म आई गिव 0 पीपल, एक्स सी 0 हम्म इन, सो इज यहाँ आएगा, राइट? वाई सी के। वाई के, वे कहा गया यार, हाँ वाई सी के। हम्म फिर देन अगर हम 1 देते हैं, लेट्स से लेफ्ट साइड को 1 देते हैं, इट विल बी एक्स सी 1 इंटू वाई सी के माइनस 1, समझ गया ना? हाँ भाई मैंने यही करा है। हाँ, अब एग्जैक्ट समेशन कर देना, मैं जस्ट, ठीक है? हम्म अब इसका फॉर्मूला तो पता है, एक्स प्लस वाई सी के, एक्स प्लस वाई सी के। बट यहाँ पर एक और कैच है कि तो ये पी वाला बंदा है, ठीक है? वो तो ही कैन, हाँ हाँ, लेफ्ट और ही राइट। कैन टेक 2 चॉइसेस हाँ बिकॉज ही कैन बी लेफ्ट एंड राइट एज बोथ, सो हाँ इनटू 2 मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको तो मॉडल इनवर्स से इंप्लीमेंट करो, बस खत्म, यही क्वेश्चन। और एक्स प्लस वाई इस क्वेश्चन में n-1 हो रहा है, ठीक है ना? तो n-1 सी के और इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो ना यहाँ पर, एब्सोल्यूट बस। बुलशिट क्वेश्चन। मेरे को समझे? पता था ऐसे कुछ सड़ा हुआ होगा भाई। अरे मतलब तू समझा, राइट? समझ गया भाई, समझ गया। हाँ, अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड समझ ओके, थर्ड क्वेश्चन में मैं दिखाई तो क्या था, बेसिकली ग्रिड था, राइट? हाँ कुछ एक ग्रिड फील्ड मान लो, मतलब ठीक है। बेसिक क्वेश्चन तो मतलब मैंने तो सेट से ही किया था, बट ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ, रुक रुक रुक। बेसिक क्या है, लेट्स से ये आई जे है, ये जो चल मैं पॉइंट कर रहा हूँ, हम्म बेसिकली तुम एक वो बना लो डीपी आई जे, यार, हाँ, डीपी, अरे रुक, हाँ, डीपी आई जे, बेसिकली टिल आई जे ऑल द पॉसिबल जॉर्स जो हो रहा है हाँ तुम कहाँ पर स्टोर कर लो, राइट? एक So सेट you में can स्टोर store कर it लो। in, हाँ, like for me, I think I have chosen a set. यहाँ पर मैंने एक unordered set लिया था, and I stored all the XORs here. Let's say x1, x2 and stuff like that, right? मैंने भी तो यही करा है। So शायद तेरा मतलब कुछ मैं बोल रहा हूँ, so अगर तू आईज में हो, then अगर इधर यहाँ से आ रहे हो यहाँ से आ रहे हो, ठीक ना, राइट? हाँ So you can add, let's say इसका वैल्यू, let's say इसका वैल्यू, let's say इसका वैल्यू क्या है, ग्रिड आई है, राइट? जो था बेसिकली। हाँ So in this cell, let's say तुम ये वाला सेट में इटरेट कर रहे हो dp i minus 1 j में, ठीक है? हाँ इसमें so this zor grid i j, ये सारे कंटेंट्स घुस जाएंगे dp i j में, हाँ भाई। राइट? और करंट And वैल्यू से ज़ोर हो जाएंगे। and similarly ये सारे कंटेंट्स भी घुस जाएंगे, राइट? हाँ Now the beauty of why this works is because वो लोग बोला था m into n is less than I think 1 3,
1000 हाँ 1000 हमारा इसी में ठीक है। हुआ था कंफ्यूज, TLEC की वजह से आ रहा था। मैंने M और N को दोनों को 1000 ले लिया था। अरे मतलब ठीक है, हाँ, एम एन लेस ऑफ 1 3। और एक और चीज है कि क्या बोलते हैं यहाँ पर जो लेक्चर सेट में इटरेट कर रहे हो, ठीक है, देयर कैन बी एट मैक्स 2 to the power 10 वैल्यूज, बिकॉज देखना, बिकॉज एवरी नंबर्स वाज लेस देन 1023, which is almost 2 to the power 10, राइट? हाँ तो तेरे पास हर कोई सेट में देयर कैन बी एट मैक्स 2 to 10 वैल्यूज, ठीक है, जिससे तुम वो इटरेट कर सकते हो इनसाइड द लूप। अगर बहुत ज्यादा होता देन यू कुडंट डू इट, ठीक है। तो ये करके उसके बाद डीपी M-1 N-1 ये जो सेल होगा, उसके बाद इटरेट करके मिनिमम ढूंढ लेना। यार मेरे को समझा दो, मेरी कहाँ गलती हो, मेरे को टीएलई क्यों आ रही है, मैंने सेम ही तो चीज करी है भाई। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कोड शेयर कर, डीबग कर देना उसे, कोड शेयर कर, डिस्कॉर्ड में कोड शेयर कर दे, मैं दिखा दूंगा तेरे देखो भाई देखो को। कोड अबे शेयर कर, डीबग। अबे रुको, मैं तो पहले फोर्थ एक्सप्लोर कर लेता हूँ, उसके बाद यार देख अभी लेता रुक हूँ। जाओ यार, फोर्थ रुक जाओ, पहले थर्ड से कहा, फोर्थ तो मैंने ठीक है ठीक क्वेश्चन है ही नहीं ठीक है पढ़ा ठीक है। है, फोर्थ भी कर दो एक्सप्लेन। हाँ कर लूंगा कर लूंगा। इसके बाद फोर्थ करते हैं भाई। ये देखो भाई, ठीक है ठीक है। दिख रही कौन है सा कोड स्क्रीन? है ये वाला क्या? हाँ दिख रही है स्क्रीन, स्क्रीन? मैं शेयर कर रहा हूँ ना स्क्रीन, डिस्कॉर्ड में शेयर कर दे, डिस्कॉर्ड में, हो तो रही है शेयर, चैट में। इसका मतलब मैं भी कोडिश शेयर दिख कर रहा रही हूँ है, ना। दिख रही है कोडिश। दिख रही है ना भाई? हाँ यार बताऊं इसमें क्या गलती है यार? अबे यार मेरे को नहीं, अरे तुम एक डिस्कॉर्ड एक बार पेस्ट कर दो ना एक बार। पेस्ट करना है क्या? ये लो यार, अच्छा, हाँ, ये बार दिखा दो मेरे को एक बार। लो भाई जनरल में पेस्ट करता हूँ। करो करो करो। रुको एक बार देखें तो, वेक्टर वेक्टर इन डीपी अनॉट में। अबे तूने मैप के साथ सेट क्यों यूज किया? इतना इतना क्या किया तूने भाई? भाई मुझे भी नहीं अबे पता मैंने क्या करा ये है। कर सकता तू, अबे तू ये कर सकता, तू डीपी वाला उसमें थर्ड डिमेंशन घुसा सकता था ना। वेक्टर वेक्टर इंट सी वेक्टर नहीं नहीं, वेक्टर वेक्टर वाला तो अनॉट। वो तो कमेंटेड अबे आउट है भाई। अभी नहीं सुन सुन, तू तू क्या कर सकता था? अच्छा वो कॉम्पोनेंट, तू जो ये वाला डीपी है ना, वेक्टर वेक्टर इन डीपी जो बोला था ना, इन छोड़ के तू वहां पर अनॉट सेट घुसा सकता है, ठीक है। ओ अच्छा, उसके अंदर ही हाँ, वेक्टर के अंदर। बिकॉज बेसिकली एवरी सेल शुड हैव अ सेट ऑफ द रोल, समझ रहा है? बस ये करने से ठीक चल है, जाएगा मेरा? हाँ, मैं तो भाई वो ऐसा किया है। एक मिनट, अनऑर्डर्ड सेट घुसा दो भाई, किस चीज का? अबे अबे रुको, मैं अपना कोड शेयर करता हूँ, रुको, मैं पेस्ट कर देता हूँ। अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंट। तूने कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स कुछ किया भाई, यार मैं मतलब पागल हूँ डेटा क्या? स्ट्रक्चर वाइज आइडिया सही था बट। अच्छा बाय द वे, सेकंड सेकंड क्वेश्चन में जो वो पैरामीटर चीज है ना, उसको वैंडर मॉडल आइडेंटिटी बोलते हैं, सो पढ़ किसे लेना अगर। किसे? उसको वैंडर मॉडल, उसको जो सेकंड वाला क्वेश्चन में सिखाया था ना, बाइनोमियल वाला चीज वो वाला, हाँ उसको वैंडर मॉडल आइडेंटिटी बोलते हैं। तो, वैंडरमॉन। हाँ, वैंडर मॉडल आइडेंटिटी। ये नाम कैसे याद रखते हो भाई आप? अबे वो ये ये सब मैंने, अरे पढ़ते मतलब, कहाँ से हो? अरे ये मतलब जेई के टाइम में सब लोग पढ़ते हैं ना, मतलब। भाई टू द पीपल हु देख डोंट नो लो भाई, देख ये लो। आईआईटी है ना भाई हमारे। अरे यार, अबे यार जल्दी से देख लो, उसके बाद फोर्थ समझाएंगे। समझाओ भाई समझाओ। फोर्थ समझाओ। हाँ क्या? फोर्थ समझा दो। फोर्थ समझा एक दो, मैं अभी फोर्थ इज क्वेश्चन ही नहीं देख रहा। फोर्थ वाला, एक फोर्थ वाला आइडिया बहुत सिंपल था। बेसिक क्लासिक कौन सी डिजिट डीपी, बट हाँ, अगर तुमको डिजिट डीपी आता है देन तो मतलब ये तो बहुत ही आसान सवाल होगा। बट एक्चुअली आसान नहीं, इन द सेंस बिकॉज बहुत ऑप्टिमाइजेशन बहुत चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ठीक है, मैं जस्ट बता दूं तो क्या हो रहा हूँ। तो आई थिंक क्या था बेसिकली, कुछ तो एक एरे था, लेट्स से आई थिंक इट वाज A1, लेट्स से एक एरे होगा। You have to construct, you have to make a new array such that हर एक एलिमेंट जो यहाँ पर है वो पहले नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट्स से दिस एलिमेंट शुड हैव दिस सम एज दिस एलिमेंट, राइट? ये वाला क्वेश्चन था, राइट? सो तुम्हें क्या कर सकते हो तुम, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली एक तो तुम्हारा स्टेट चाहिए इंडेक्स, राइट? लेट्स से तुम कौन सा ये एरे का कौन से चीज में इटरेट कर रहे हो, और एक चाहिए तुम्हारा प्रेव।
बिकॉज टू मेंटेन द फैक्ट दैट तुम इंक्रीजिंग कर रहे हो, ठीक है, भाई राइट? एक मिनट यार, आप अपने एक्सकैली का यार ठीक है बैकग्राउंड ठीक कलर है। डार्क कर दो प्लीज, बहुत लाइट है। क्या एक्सटैली में? एक्सकैली का पेज कलर ब्लैक कर दो ना, लाइट मोड में चल रहा है अभी, एकदम आंखों पे लग रहा भाई ये कैसे, अच्छा ये कैसे करते हैं? है। कहीं तो होता था बैकग्राउंड का ही जो ऑप्शन है। अरे हाँ इसमें ना, हाँ रुको, ब्लैक। अरे हुआ क्यों नहीं? मेरा यार, ऊपर ऊपर ट्रिपल उससे होता है शायद, जो ट्रिपल ऊपर दिख रही है ना लाइंस, लेफ्ट कॉर्नर में, थीम थीम डार्क। हाँ। थैंक्स। हाँ, सो तुमको ये वाला चीज समझ में आया कि मैं इंडेक्स ऑफ प्रेफ क्यों ले रहा हूँ? हाँ भाई। सो राइट, सो लेट्स से आई एम एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, राइट? मेरे को अपना प्रीवियस जो प्रेफ वाला जो एलिमेंट बैठ गया था उसका पता है मेरे को, राइट? बिकॉज आई एम कैरिंग द इन्फॉर्मेशन एट एवरी स्टेप। तो एक लूप लगा सकता है फ्रॉम लेट्स से 0 to 5000 जो है यार, जीरो टू बोला था ना कि हर एवरी एलिमेंट मस्ट बी बिटवीन 0 to 5000, राइट? एंड तू देख सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके लेट्स से मैं एक लूप कर रहा हूँ। लेट्स से अगर कोई भी नंबर आए ताकि इसका डिजिट सम जो इसका जो एलिमेंट है उसे सेम हो जाए, देन वी कैन प्रोसीड विद दैट थिंग, राइट? ये समझ में आया, राइट? लेट्स से तू लूप कर रहा है, लेट्स से num is the current current number in this loop, right? अगर इसका डिजिट सम तेरा वो ये वाला एलिमेंट के साथ सेम हो जाए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, एंड ऑल्सो इफ num is let's say more than equal to pref, because बहुत है ना नॉन डिक्रीजिंग वाला कंडीशन, then then you can move to the next state, right? Let's say f, let's say मतलब यहाँ पर तो रिकर्सिव कॉल कर सकता है यार, कहा गया? Let's say I+1 and your new pref is a num, right? सो या इससे हो जाए, बट ये क्या बोलते हैं इसके, तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्स देता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डीपी का कितना वो है, आई थिंक 1E3 इंटू प्रेफ का 5E3। ये जो 5000 का लूप है ये लगाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, Like वो ये बोल रहा हूँ, इसमें ऑप्टिमाइज और कर सकते हैं। और इसमें मैं क्योंकि ये 5000 का लूप देख के मैंने छोड़ दिया था कि नहीं हो पाएगा ऐसा, और ऐसा नहीं कुछ मतलब लगा। देखो इसको एक चीज, देयर इज समथिंग कॉल्ड डीपी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? मतलब स्पेशली देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रीफिक्स स्ट्रक्चर्स बेस्ड डीपी ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कुछ कॉल नहीं, मतलब बेसिकली तुम प्रीफिक्स जैसे प्रीफिक्स सम होता है ना, उसके यूज करके तुम अगर तो एकदम ब्रूट फोर्स से डिजिट डीपी देखते हो, तो इसका तो बहुत टीसी हो रहा है, राइट? तुम एक काम कर सकते हो कि थोड़ा प्री कॉम्पिटिशन काम कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हर एलिमेंट ऑफ दिस एरे, ओरिजिनल एरे इज लेस देन इक्वल 50, राइट? और अगर लेस देन इक्वल 50 होता है, देन यू कैन एक हैश मैप बना सकते हो कि लेट्स से मेरा ये डिजिट सम, लेट्स से मैं 80, लेट्स से मेरा डिजिट सम 7 है, साला फॉर एवरी फकिंग रीजन, बट ठीक है। अगर डिजिट सम 7 है, इसमें कौन कौन से नंबर्स है कि जिसका डिजिट सम 7 होगा, ठीक है? बिकॉज अगर तुम ऐसा करते हो, देन दिस विल गिव यू आई थिंक एट 200 to 300 नंबर्स, राइट? सो उससे करके वो करके अगर तुम इटरेट करो, देन ये 200 हो जाएगा, राइट? सो व्हाट यू आर सेइंग इज लाइक कि 1 से लेकर 50 तक के जो भी डिजिट्स हम बन सकते हैं उन नंबर्स को अलग रख लो। देख नॉट एग्जैक्ट, यहाँ पर 1, बिकॉज तेरा एरे आएगा एलिमेंट कहता है 0 to 5000, राइट? तुम 0 to 5000 लूप चलाओ, तुम हर एक हर एक नंबर का डिजिट सम निकालो, ठीक है? द डिजिट सम विल बी बिटवीन 0 to 36, राइट? बिकॉज Yes, yes. 4 डिजिट नंबर हो सकता है, राइट? तो Yes. इसको तुम हैश कर लो कि लेट्स से 0 to 36, लेट्स से द डिजिट सम इज 35, इसमें कितने नंबर, कौन सा नंबर्स है, यूजिंग अ वेक्टर, मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर, समझ गए? हाँ बिल्कुल। अगर तो ये करते थे, ये दिस रफली गोज ऑन 200, राइट? ये मैंने किया था, फिर भी मेरे को टेल ही दिया था। सो उसके बाद तुमको दे समथिंग फॉर प्रीफिक्स ऑप्टिमाइजेशन,
मतलब एज यू कैन सी, जो ये हम लूप कर रहे थे ना, लेट्स से फ्रॉम इंडेक्स आई टू 5v3, हम क्या कर रहे थे, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो, हम बेसिकली क्या बोल रहे थे, लेट्स से आंसर प्लस इक्वल टू, अरे यार, हाँ, प्लस इक्वल टू एफ ऑफ ये वाला चीज, ठीक ना। अब ये थोड़ा अगर दिखता है, ये दिस काइंड लुक्स लाइक प्रीफिक्स सम, ठीक ना, मतलब अगर कंडीशन हो रहा है तो एफ प्लस इक्वल टू नम नम कॉमा दिस आई कॉमा प्लस आई प्लस वन नम वन आई प्लस वन नम टू, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। सो सो you have to make a separate, क्या बोलते हैं, you have to make a separate prefix array and do it. वो इस एक्स का ड्रॉ में करना तो काफी टफ है, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो प्रैक्टिस कर सकते हो। सो वो वाला काफी टफ है, प्रीफिक्स पे तो ऑपरेशन देख रहे हो उनकी भी जरूरत नहीं है, 2 पॉइंटर से हो जाएगा। एक नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोसेस करो एंड लाइक पीछे वालों का सम लेते जाओ जो भी उससे छोटे हैं। मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था। Bro, we got अच्छा, battle of the nerds. मतलब हो सकता है, मतलब मैंने सोचा नहीं कभी ऐसा। सो मेरा भी मॉडलिंग एग्जैक्टली सेम था कि ये इन्वर्टेड मैप बनाया, सम ऑफ डिजिट्स टू ऑल द नंबर्स, एंड वो सॉर्टेड होगा। व्हाइल आई वाज मेकिंग ट्रांजिशंस, मैं बस उसे सॉर्टेड ऑर्डर में 2 पॉइंटर से इटरेट कर रहा था। मैं सॉर्ट ऑर्डर से बाइनरी सर्च किया था, बिकॉज जैसे प्रेव है, मैंने नेक्स्ट वाला ढूंढ रहा था, फिर मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। समझ गया, मतलब नेक्स्ट वाला ढूंढ के तू प्रीफिक्स हम लेने की कोशिश कर। मैंने वो सोचा था बट टू मच कोड, तो मैंने बस 2 पॉइंटर से कर दिया। हाँ, इसे अरे मतलब हाँ, प्रीफिक्स स्पेस में बहुत काम करना पड़ता है। सो ठीक है, आपका ऑल किल हो गया सौम्या भाई? यस, और मैंने गलत अकाउंट से किया और सारे तूने मेरी गांड मार ली कि क्या कहते हैं, मैं गलत अकाउंट से दिया। अच्छा वो भाई मुझे पता नहीं था, मुझे लगा जैसे मेरे साथ हुआ है ना आज, गलत अकाउंट से ऑल किल। कभी आपको मैं अपने अकाउंट का एक्सेस दे देता हूँ, कभी मेरा यूज कर लेना भाई गलती से। क्या रेटिंग है भाई आपकी? मेरी इस अकाउंट में, मतलब मैं लीड कोड नहीं देता ज्यादा, बस अभी स्ट्रीम देख के मैंने दे दिया था एक कॉन्टेस्ट। अच्छा, सीपी का है वो, अभी इकॉन की तरह। ओके भाई, क्रेजी। हाँ, मतलब अगर तुम सीएफ करते हो देन तो मतलब ठीक है, लीड कोड कॉन्टेस्ट इतना वो नहीं होने वाला। आप सब इकॉन एक expert बार ये हैश मैप बनाने के बाद में क्या करना था वो बता सकते हो? क्या हैश मैप जो फिल कर दिया था 1 से लेके 50 तक का जो डिजिट सम होगा, उसके बाद का क्या कर रहा था? उसके बाद तो मतलब बहुत सारे टेक्निक्स हो सकता है। एक तो मतलब प्रीफिक्स सम वो ऑब्जर्व कर सकते हो, या इधर दैट, या सॉर्टेड रैकर, जैसे जो प्रेव है उसके बाद तुम बाइनरी सर्च करके नेक्स्ट कौन सा भरने वाला है वो भी कर सकते हो। मतलब इसको थोड़ा क्या बोले, मतलब हाँ, ऐसा कर सकते हो। उसको 2 पॉइंटर्स या बाइनरी सर्च से भी कर सकते हो। भाई कल का कौन कौन दे रहा कॉन्टेस्ट? अगर उठ पाया तो दे दूंगा। भाई आप तो यार आधा घंटा लेट उठो तब भी आप ऑल किल कर दोगे। अरे मतलब मोटिवेशन नहीं आता ना, मतलब क्या ही करो। सही बात है। मोटिवेशन क्यों ही आएगा? गार्डियन मैच जो मिल गया ना आपको? अबे मिला था, बट वो घट गया था बिकॉज मैंने गलती, मैंने एक कॉर्नर 40 में दे करके दिया था, ऑल किल किया था, उसके बाद एकदम गिर गया था मेरा। उसके बाद मैंने दिया ही नहीं। सो ये वाला मैंने दिया था। ये वाला दिया, मेन आईडी से ही दिया ना? हाँ भाई, मेरे एक ही अकाउंट है भाई। ओ, क्वेश्चन 3 सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ये कौन दे रहा है भाई? अमन कुमार पटेल। क्वेश्चन 3 का बिट सेट। भाई मैं तुमको एक वो जो क्वेश्चन 3 वाला क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन तुम सर्च करो, मैं दिखाता हूँ, रुको। एक क्वेश्चन है, आई थिंक इट इज सबेरे। भाई अब आज और कोई क्वेश्चन नहीं आया। नहीं, मैं तुमको बोल, ये ऑलमोस्ट सेम नहीं, मतलब ये काफी हेल्प करेगा तो ये कॉन्सेप्ट। होमवर्क में दे दो आप मुझे, होमवर्क में दे दो। मतलब ठीक है, मतलब मैं थोड़ी ना अभी सॉल्व करने वाला हूँ। कल का देने वाले? यस ब्रो, कल का भी देंगे, कल भी रेटिंग गिरेगी। यार हार्ड क्वेश्चन को आप कहते हो इजी है। अबे अबे देखो ना, रुको। अबे ये जो कॉन्सेप्ट है काफी एलिमेंट्री है। मतलब तुम्हें कोई भी एरे ले लो, इसका जो सब एरेस है, मतलब कोई सब एरे सब सीक्वेंस कुछ भी पकड़ लो, अगर बोलता है कि इसका बिटवाइज और बिटवाइज एंड, क्या क्या? सबको पता है ना कि और एंड तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता है, राइट? हाँ तो लेट्स से यहाँ पर नाम से क्या 10 to 9 है, मतलब एट मैक्स 30 बिट्स, राइट? हाँ तो जब तो ये भी तुम सेट वाला अप्रोच से करोगे, राइट? टाइम तुम्हारे सेट में एट मैक्स 30 एलिमेंट्स हो सकता है, राइट? तो इसलिए मतलब वो फीजिबल हो जाता है। तो जॉर में मतलब हाँ, जो जॉर तो मोनोटोनिटी का कोई प्रॉपर्टी नहीं है,
इसलिए कुछ कुछ लोग होते हैं कि जो लोग आज का जो थर्ड क्वेश्चन था ना, वो लोग नॉर्मल वो राइट डाउन करेंगे, एक वैल्यू को वो करेंगे, वो तो नहीं होने वाला, वो नहीं होने बिकॉज वाला। हाँ, बिकॉज और कैन हैव अ रेंज ऑफ वो वाला चीज, तो या बट हाँ, Crazy भाई, नहीं crazy। मतलब काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट अरे मतलब फोर्थ वाला हो जाना चाहिए था, बट यार अरे बहुत दिनों से मैंने प्रीफिक्स वाला चीज नहीं किया था, मुझे मैं थोड़ा ये कौन गुस्सा, तुम्हारा यूजर नेम बता दो एक बार, मेरे को Q4 का सोल्यूशन देखना है। मैंने किया नहीं, मैंने वो सबमिट ही नहीं किया, मैं गलत है हुआ ना, अच्छा पीयूष मैं भाई गलत है, बट आपका कैसा गया? टीएल आया था, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ भाई। पीयूष भाई आपका कैसा गया यार? थर्ड में भाई, मैंने 3 कर दिया आज और मजा आ गया और एक भी TLE-MLE नहीं हुआ। भाई क्या रेटिंग है भाई? भाई अब मेरी शायद +30 हुई है आज, तो है कितनी अभी? शायद 18-20 हो गई होगी। भाई क्रेजी, भाई क्रेजी। 6 महीने हो गए, रोज 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। डैम। हाँ, भाई सही एक है। क्वेश्चन था। 700 प्लस हो गए। तेरे भाई। क्रेजी ब्रदर, अबे हाँ, 7 मेरे भाई। हेलो। हाँ जी भाई, पूछिए, एक्स भाई पूछिए। अरे एक क्वेश्चन था, मतलब थर्ड में अगर मैप यूज किया ना, मीन्स टीएलई मिल रहा था, और उसी की हाँ जगह वेक्टर यूज किया ना। अरे हाँ, वेक्टर में थोड़ा कम ओवरहेड होता है ना, सो वो कर सकता है। यार, मेरे को तभी टीएलई हाँ, आया यार। वेक्टर में भी ना अगर टप्पल बनाए ना उसके अंदर, उसमें भी टीएलई दे रहे। बस स्पेसिफिकली जितने उसमें कंस्ट्रेंट है ना, उसके हिसाब से मैप बनाए ना, तभी पास हो रहे। यार, भाई मेरा तो -5 होने वाला है, मैं देखा इंटर नाम में मेरा। एक मिनट, मैं भेजता हूँ, एक मिनट। भेजो भाई, भाई मेरा इसीलिए। वो सेकंड वाला जब मैं क्वेश्चन, वापस आइटरेट कर रहा था ना, इटरेट कर रहा था मैं वैल्यूज स्टोर करके लास्ट के, जैसे कि बीएफएस यूज करके जैसे एंडिंग में पहुंचते हैं ना, तो हाँ। हर एक एक्स और वैल्यूज स्टोर करके रख रहा था। उसी टाइम मैं वेक्टर यूज कर रहा था, मैप ये सब। ओके। वेक्टर में एक्सपोर्ट। टपल्स रिपीट हो गए। हाँ, भेजा है। कहाँ और भेजा टपल भाई? में इटरेट मार रहा है, उसमें भी टीएलए मिल रहा है मुझे। जनरल में भेजा है? हाँ, जनरल में भेजे। टपल में टीएलई था? मैं अभी ट्राई किया, मैं टपल में ओ ट्राई कर रहा था मैं। भाई, यार मैं कह रहा हूँ डिनर करने जाओ, कल सुबह फिर ये हालत होगी। सर्वे कॉन्टेस्ट चलता रहेगा यार, अब तो मेरे को आदत होगी। भाई तुम लोग बिट सेट यूज किया, बिट सेट मतलब काफी अच्छा है, मतलब अगर यूज कर सकते हो तो। बिट सेट क्या मैंने होता है बिट भाई? सेट यूज किया था। अबे बिट सेट वही है ना कि लेट्स से अगर तुम बिट सेट लेस 1024 डिक्लेयर करो, मतलब 1024 वाला बिट्स है ना। हाँ। बिट मतलब सेट का पॉइंट ये है कि इंस्टेड ऑफ कि 1024 इंट यूज करो टू हाँ। टेल कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं स्टेट, बिट सेट में क्या होता है सी प्लस प्लस में कि एक ही बिट यूज होगी, तो जो तुम्हारा कांस्टेंट फैक्टर है वो बाय 32 डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक इंट में 32 बिट्स होती है एंड बिट सेट में एक बिट एसोसिएट होगी टू टेल इफ इट्स ट्रू और फॉल्स। इट्स अ अच्छा इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन इन सम सेंस की लॉजिक सेम है, बट लाइक इंस्टेड ऑफ 32 बिट्स फॉर टेलिंग कि ओ ये 1 है तो ट्रू है, 0 है तो मतलब फॉल्स है, यू 32 जस्ट 1 बिट। मतलब ये बता, 32 को एक में मैप कर लिया बेसिकली। मैप करता है हाँ ये, मतलब मैप की तरह काम करता है, सेट की नहीं तरह। नहीं नहीं, इसे इंट की तरह ही मान सकते हो, बट इट ओनली हैज वन स्टेट, 1 और 0। मतलब जैसे बुलियन होता है ना, हाँ। तो इट्स लाइक बुलियन, बट बुलियन भी आई थिंक सी प्लस प्लस में 4 बाइट लेता है या 2 बाइट लेता है, पर एक बिट सेट में जो एक बिट होता है वो प्रॉपर एक बिट होता है कंप्यूटर के अंदर, तो तो यू हैव अ वेरी गुड कांस्टेंट फैक्टर ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका यूज कैसे कर रहे हैं? एक मिनट, मैं तो जैसे सारे जॉर वैल्यूज निकाल रहा था फॉर एवरी स्टेट, तो अब उसकी जगह यस, ये सिंपल बिट सेट से कैसे हो रहा है? बिट सेट का आइडिया ये, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ मैप ना, डू व्हाट, मेक अ वेक्टर ऑफ साइज से 1024, क्योंकि जॉर उससे ऊपर जाएगा नहीं, हाँ। राइट? हाँ। एंड अब मान लो 3 था पहले जॉर प्रेजेंट, तो थर्ड बिट को बस 1 कर दो, थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको 1 कर दो इसमें वेक्टर में, ओ अच्छा, बिकॉज बिट सेट डोमेन का बहुत साइज, छोटा है हमारा। बिट सेट का साइज 10 मतलब 1024 रख लेंगे, और जो भी नंबर हाँ, प्रेजेंट होगा उसके बिट सेट में 1 कर देंगे। उसकी पोजीशन को 1 कर देगी कि पोजीशन को थर्ड 1 कर देंगे। 3 बन रहा है अगर और पीछे का तो 1 कर दो, 7 बन रहा है 1 कर दो, 1000 बन रहा है 1 कर दो। मतलब वेक्टर की तरह है, बट बेटर हाँ वेक्टर है, बस स्पेस। इट्स जस्ट अ कांस्टेंट फैक्टर
optimization over a vector. If you know your vector only has true and false state, always use a bit set. इसकी वजह से मतलब TLE मतलब वेक्टर्स रूल यूज ना करके बिट सेट यूज करना ज्यादा अच्छा है. Yes, this is also like primarily it is used in knapsack DP. उसमें it gives a constant factor optimization. Knapsack में because you do क्या कहते हैं, it boils down to bit set operations. उधर यूज होता है ज्यादा. crazy. क्या रैंक मैंने आई कभी यूज सौम्या नहीं भाई? किया. ऑल सुना किल पे कितनी रैंक आई? हाँ 600 कुछ आई. सी पे मैंने मतलब थर्ड प्रॉब्लम पे मैंने बहुत टाइम लगा दिया. मैंने पहले फोर्थ कर लिया था, थर्ड मुझे लग रहा था टीएलई करेगा, फिर मुझे एंड में दिखा कि एन इंटू एम छोटा है. ओह हाँ, मैंने देखा जो ज्यादा ही प्रो लोग होते हैं भाई सीपी वाले, वो कंस्ट्रेंट्स देखते ही नहीं है. डायरेक्टली दे जंप ऑन टू द प्रॉब्लम. आई मीन एक है कि तू प्रॉब्लम देखकर समझ सकते है कि क्या कॉन्स्टेंट्स होने वाला है. अगर कोई डिजिट टीपी का प्रॉब्लम है, हाँ यू नो कि इसका कॉन्स्टेंट्स कम होने वाला है, राइट. अब मतलब कम इन द सेंस लाइक अगर लेट्स से 10 to 9 बोलता है देन तो मतलब ऑब्वियस है कि 9-10 प्लेसेस ही है ना, राइट. सो इट्स वेरी इजी. लेट्स से अगर वो वाला कोर्स क्वेश्चन में जो यू कैन आल्सो चेक बाय डूइंग ब्रूट फोर्स कि कितना डिजिट्स हमारा है. मैंने पहले ब्रूट फोर्स लिखा था एक लोकल पे और देखा था कि 5000 तक नंबर दिए थे कि 31 से बड़ा नंबर नहीं आएगा कभी. तो वंस यू नो 31 से कोई बड़ा नंबर नहीं आएगा, प्रोबेबली अ ब्रूट फोर्स विल पास. तो इस तरीके से हाँ यू कैन मतलब आल्सो चेक. हाँ मतलब वो भी कर सकता है आफ्टर एनफ प्रैक्टिस. मतलब इतना जरूरी नहीं होता, तो मैंने देखा है. टू बी श्योर. हाँ मतलब हाँ वो भी है. मतलब जब भी तुम देखोगे कि कोई प्रॉब्लम में लेट्स से देखते हैं कि तुम 10 to the 5 10 to 9 ये सब तो कॉमन कंस्ट्रेंट्स है. लेट्स से अगर तुम किसी को हट के देखोगे नम साई बहुत कम है, नम साई का रेंज बहुत कम है, तो मतलब आई थिंक कुछ चमक चाहिए. यू कुड इधर यूज अ बिट मास सोल्यूशन. मतलब आई थिंक उसमें बिट मास काफी यूज हो सकता है, या कुछ प्री कॉम्पिटिशन जो अगर बचा सकते हैं काफी अच्छा होता है वो वाला. भाई वैसे देखो, मैं डिनर करने जा रहा हूँ. धन्यवाद आप लोगों ने सिखाया. कल भी आ जाना यार, कल भी मेरे को लग रहा है मैं हूँ आफ्टर टुमारोज मॉर्निंग कॉन्टेस्ट. दे रहे हो ना सब? इकॉन भाई तो दे हाँ रहे हाँ. भाई एनसीआर की टेम्पलेट बना ले तू. हैं. ठीक है भाई, बना अरे लेंगे. मतलब जीपीटी से अभी उठवा अभी लेंगे. कोड फोर्स में ऐसा ये होता है कि तुम लोग आईडी में करते हो तो बहुत सारे टेम्पलेट्स हो जाता है, राइट. तुम हाँ ऐसा नहीं कि खुद से इम्प्लीमेंट करते हो. लीड कोड में अगर तुम वो कॉपी पेस्ट करने जाओ देन तो वो फ्लैग कर देगा ना. सो इसलिए खुद से लिखना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता. लैग होता है क्या? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर अपना लिखा हुआ टेम्पलेट हो तो. मैंने तो टेम्पलेट कॉपी लोग यूज पेस्ट किया. करते हैं वैसे, मैंने देखा है. अच्छा बट मैंने क्यों नहीं किया, बिकॉज यू नो नॉट व्हाट द रिस्क यार. अगर खुद से लिखा है तो फिर तो क्या ही प्लेजरिज्म लगेगा. नहीं नहीं खुद से लिखा ठीक है, बट अगर जैसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी गिटहब में अगर पड़ा हुआ. मतलब पता है प्रोबेबिलिटी कम होती है. हाँ मतलब पर रिस्क क्यों लेना ना. मतलब मैं तो नहीं लिख रहा दोबारा, मैं तो कॉपी पेस्ट ही करता हूँ मॉडर्न का. अरे मतलब अरे अगर छोटा छोटा हो देन ठीक है, बट लेट्स से अगर जैसे मेरे पास एक बाइनरी लिफ्टिंग का पूरा टेम्पलेट है, बट उसको कॉपी पेस्ट वो काफी बड़ा है, सो वो कॉपी पेस्ट करूंगा तो मतलब थोड़ा वो हो जाएगा. बोलेगा एक्सटर्नल पेज मोर देन 500 कैरेक्टर्स कुछ कुछ. भाई मैंने अब जैसे टेम्पलेट. अगर मॉडर्न का टेम्पलेट पूरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. हाँ एग्जैक्टली. मतलब मैं तो हाँ मतलब अरे वही ना, इनवर्स इनवर्स वो तो सिर्फ बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का कोड लेगा, उसके बाद जस्ट पावर को चेंज कर लो और कुछ क्योंकि मैंने सेकंड में लिटरली सिर्फ 2 लाइनें लिखी है. भाई ये लोग तो भाई क्रेजी हैं. These people are crazy. Why am I feeling like dumb listening to their conversation, bro? Imagine me. मुझे फोर्थ क्वेश्चन में एक लाइन समझ नहीं आई. नहीं के लिए, एक तरह इनवर्स के लिए मैंने उसके हाँ, लिखा था. मतलब मैं अपना बताता कि मेरे पास तो सब लिखा हुआ है, वही कॉपी पेस्ट है. तो हाँ. 2 लाइन लिखी है मैंने बस. अच्छा हाँ मतलब अच्छा देन तो मतलब ठीक है, मैं समझ सकता हूँ. अगर अगर कोड फोर्स में अगर लेट्स से ये हुआ देन तो मैं ऑब्वियसली कर लिया, ऐसे ही करता. बट हाँ अरे हाँ मैंने सेकंड में क्या किया था, मैंने 2 into वो किया था, राइट. तो मेरा रॉन्ग आंसर एक बार आया था, फिर मैंने देखा कि मैं लास्ट में मोड नहीं लगाया था, इसमें मेरा गलत आ गया, इसमें मैं पेनल्टी आ गया था. ये चीज अवॉइड हो जाती है टेम्पलेट से. टेम्पलेट से मैंने टेम्पलेट में मैंने मोड दिया था, लास्ट में मैंने डॉट वो 2 into उसमें मोड नहीं दिया. समझ गया मैं. नहीं मतलब अगर मॉडर्न क्लास बना के वैसे उस पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग लगाए प्रॉपर अच्छा जैसे लोग करते हैं, हाँ, उससे उसमें नहीं. avoid हुआ. मतलब वो हाँ डेटा टाइप ही अपना बनाए तो उसमें नहीं होता ना फिर.
हाँ भाई हाँ वो भी है। मॉडर्न की टेम्पलेट शेयर कर देना। सॉरी मॉडर्न की टेम्पलेट शेयर कर देना यार, क्लास। मेरा सीपीपी में नहीं है, किसी और अच्छा से ले लो। कोई नहीं। भाई आप तो रस्ट में करते हो ना सार्थक भाई? मतलब जावा में भी है मेरे पास। नीलवू का उठा सकते हो, एक टेम्पलेट आता है सीपी का, मैं भेज दूंगा, वो अच्छा होता है। यार, कल कल सुबह दे रहे हो ना कॉन्टेस्ट सार्थक भाई? अगर उड़ गया तो चलो भाई। सबसे बुरा लगता है अगर सेगमेंट्री का क्वेश्चन आ गया और उनको पूरा सा लिखना पड़े, मेरे को मतलब हाँ, नहीं मेरे उसमें तो वो तो बहुत बार हो जाता है। उसका भी टेम्पलेट इसलिए भाई वही सेकंड ना, वाले का टॉपिक क्या था, कॉम्बिनेटोरिक्स क्या था वो? हाँ मतलब कॉम्बिनेटोरिक्स। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही था, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही है, हाँ जेई लेवल का ही ऑनेस्टली। जेई लेवल का नहीं, मतलब वो बायनरी वाला चीज वो जेई लेवल का फंडा था, बट बाकी तो काफी आता है। मतलब हाँ, इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो पता होना चाहिए, बट हाँ कॉन्सेप्चुअली जेई लेवल वाला ही था। हाँ हाँ, मतलब हाँ थोड़ा मॉडलिंग बस जाना चाहिए, नहीं तो कभी भी वो नहीं कर पाओगे। अब सीखूंगा इसके बाद ना, स्ट्रीम ऑफ करके मैं मॉड्यूलो इनवर्स के एक दो मतलब क्वेश्चन सीखूंगा 100%। पिछली बारी भी यार बताया था, वो सीखा नहीं आज, फिर हुआ ही नहीं। ये सीखना नहीं, पड़ेगा। कोई भी नंबर थ्योरी टैग से एक कुछ देख लो जिसमें एनसीआर का कुछ हो रहा है। मैं बोल हाँ रहा हूँ कॉम्बिनेटरिक्स टैग लगा लो एक लीड कोड में। हाँ मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो होगा ही, ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन उठा लो, हार्ड मीडियम हार्ड कैटेगरी कुछ भी उठा दो, मिल जाएगा। डन। चलो भाई अब मैं जाता हूँ डिनर करने, आई लाइक द स्ट्रीम, थैंक यू भाई। कल मिलते हैं, बाय बाय, यू गाइस कंटिन्यू। ब्रो झूठ तो मत बोल भाई प्लीज। क्या प्रदीप ब्रो, चिल आउट, झूठ नहीं, आई एम जेन्युइनली नॉट इवन जोकिंग। अब मेरे को भाई सीखना पड़ेगा मॉड्यूलर यूनिवर्स। आज इतना बुरी एम्बैरेसिंग कॉन्टेस्ट था ना ये मेरे लिए। इमेजिन डूइंग वन क्वेश्चन आउट ऑफ फोर, दैट इज गॉडडैम इनसेन। कोई ना, विल रिपीट द सेम परफॉर्मेंस टुमारो। Worst, I say this every time, but this time I mean it. Worst contest ever. I literally feel like sucking their dick, bro. Same. I mean, not same, bro. That's just you. That's just you. See ya, yeah, bro. Just go have dinner at this point. Lead code is not for me. I'm not for lead code. Check CP template. Bro, Shaitan, why don't you come into the voice chat? कल एक all kill होगा तेरा, बस भाई, बस। ये तो भगवान भी हंस रहे होंगे, कल all kill होगा तेरा। पता नहीं यार, मैं प्रैक्टिस भी तो नहीं कर पा रहा, दैट्स द मेन पॉइंट। हु नोस, लेट्स सी ब्रो व्हाट हैपेंस। डिस्कॉर्ड, ओके ओके, आई विल सी शैतान ब्रो। आई नीड टू आल्सो poop ब्रो, बहुत तेज प्रेशर बनना है। दैट्स इट फॉर दिस स्ट्रीम, थैंक्स टू